Assalamu alaikum everyone. Just to introduce myself, my name is Shaikh Salman and I'm partner in EY Ford Roads. Or with ICAV, I'm also associated with the Southern Regional Committee. And thankful to everyone for being here on Sunday morning, which is not an easy task, especially after watching late night football matches these days. So it's really great to see all of you here. अच्छा, मैं start करने से पहले I would like to thank Asif for giving a very comprehensive brief about internal controls. Now, I think the stage has been set since yesterday. We have been learning that what is the client acceptance process, what are the risk assessment processes. I think कल आप लोगों ने ethics के ऊपर भी शायद there was a session and client acceptance पे था, risk assessment पे था. And then today morning, we have a brief session on, detailed session rather, on internal control. So now what is the next phase when we talk about the audit execution? Mike? Because I think there are three phases as Asif explained. कि पहला तो आपका होता है risk assessment or planning का, then we have execution and then conclusion. So risk assessment and planning is significantly covered, the main areas, and then we have to move towards the substantive. So substantive में enter होने के लिए what we are going to discuss today, the most, obviously it's not possible to cover everything in 2-3 days. So those सबसे पहला question जो सबसे ज़हन में आता है when we have to enter into a substantive testing कि काम कितना करना है. Because obviously we have no idea कि कितना extent cover करना है, क्यों करना है. Then we have to see a couple of things. And उसमें सबसे important चीज आ जाती है कि what sort of samples you are selecting, samples को कहाँ से select कर रहे हैं, basis क्या use कर रहे हैं, techniques क्या use कर रहे हैं. So we will try to cover 2-3 things from that. Before going into the sampling, I think Asif has already explained the questions. लेकिन यहाँ एक question किसी ने raise किया था regarding के if the previous auditor has some reservation, आपने किया था शायद. So the question is के how do you get to know about what are the reservations raised by the previous auditor? एक तो तरीका होता है कि you have to see the auditor's report. Secondly होता है कि वो जो आप professional clearance भेजते हैं and the auditor reply, and then there they mention something which is very important. So if there they have mentioned something, then your question to their auditor should be ke, why that thing is not reflected into your audit opinion. The first thing, if like it's not very easy for an auditor to just walk away with a professional clearance thing ke yaar maine to aapko bata diya tha lekin mera audit opinion clean tha. So again wo jis tarah usne Asif ne kaha ke questioning mind is something which has to be there. So it's a very tricky area that when you're accepting a new client and previous auditor has some concerns, then you have to see where they have raised the concerns, how they have dealt those within the audit report, and then obviously you can make a decision. So there's no black and white for such issue as such. Okay, now audit sampling may. Obviously, there are too many slides, too many texts. I'm not going to read all those because I believe that these presentations will be available with you, if I'm not wrong. The presentations, they will have the access to the presentation. No, in the archive or something. So you will have the access of these presentations. So we'll try to not to talk or read from the presentations much, but obviously जो मैंने कुछ चीजें underline की हैं, we'll try to focus on those. Now, what is audit sampling? Audit sampling में अगर आप देखें 2-3 चीजें हैं which are very important. That it's a technique which determine the number of items from a population. Now, what is a population? What is the number of item, and how to select the item? So ये 3 चीजें हैं when we decide that we are going for not a fully substantive approach. Now, what is a fully substantive approach? वो आसिफ ने पहले discuss किया. When we have decided that we are not going to rely on the controls, then obviously we move towards full substantive procedures. And when we move to full substantive procedures, then we are not going to talk much about what is audit sampling. अभी हमने ये under this assumption we are just discussing that we have decided to use the
test of detail or the controlled reliance approach, and based on that we are designing our substantive procedures. और उसमें हमें देखना है कि हमें काम कितना करना है, volume कितना cover करना है. So in sampling is a technique which determines the number of items from a population. Population is very important. हम उसमें बात करेंगे डिटेल में कि population में से जब हम item उठाते हैं from audit sampling, then we have to be very much sure that the population we are using to select a sample is correct or not. Now, what are the characteristics? वो हम थोड़ा डिटेल में उसको करेंगे. And how to select the items. Now, how to select the item is something वो जो हमने सुना है कि basis of sampling क्या होती है, statistical sampling है, non-statistical है, judgmental है, haphazard है. तो उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे. अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में the last line, if you see, we exercise the judgment in choosing and executing an appropriate sampling technique. There is no way that any tool or any formula can drive you at the conclusion that you have to use XYZ approach for audit sampling. Professional judgment will always come into play, but obviously after considering a lot of factors. Now, what those factors are, we will cover those. But obviously professional judgment is something which we have to exercise even when we are using any predefined technique or any basis of sampling. Okay, objective मैंने आप लोगों को पहले बताया कि we will talk about the sampling technique and we will also explain how to apply each technique in different situations. We will try to share some examples with you. Practical life में I think आप लोग ज़्यादा client face पे होते हैं, population को close देख रहे होते हैं, तो it would be good to hear from you. Me and Asif will also try to share our experience with you all. So we'll try to make it more practical discussion. Okay, before, as I said, before reaching to a conclusion, what are the approaches of selecting items? Again, selecting items के तीन major चीजें हैं. Selecting all items in the population, ठीक है? Even when you have relied, somebody even asked over here कि when we have decided that we are not going to place reliance on control, फिर हमें क्या करना होगा? ठीक है, उसमें क्या करना होगा? उसमें most probably आपको, बल्कि definitely आपको substantive approach के ऊपर जाना होगा. But even if you have a reliance on control, you can always go for a full substantive, 100% examination of population, depending upon what your objective is. If your objective is कि नहीं यहाँ पे I think their past के अंदर कोई जिस तरह आपने बोला कि past or previous auditor ने कोई concern raise किए थे, so probably you will end up doing 100% examination even if the controls are effective. So in that situation, the first approach of selecting item is 100%, which is very rare, and also it depends upon the size of the operations of the company, and unnecessary auditor doesn't want to put their life in trouble by doing 100% when you can take the leverage from the control reliance approach. Then we have the selecting key items in the population. Now, what is a key item we will discuss, but just a quick view that आपने एक threshold define कर दिया है कि key item is, for example, 100,000. Now that 100,000, it's not necessarily a judgmental 100,000. It could be your tolerable error. It could be some percentage of your planning materiality based on whatever your methodology or your own firm's assessment is. तो उसमें आप selecting key items भी कर सकते हैं. In that selecting key items, that is not an audit sampling actually, because you have picked and choose कि यार मुझे ये 10 items करने हैं based on this monetary value और बस इसके अलावा कुछ नहीं करना. So that is a one approach. And then we have the last one, which is audit sampling, which is a common technique or approach we are using throughout our audit. Now the decision as to which approach to use is specific circumstances. जैसा मैंने आपको बताया कि कोई specific areas आपको cover करने हैं. For example, you have some concern over company's inventory based on your experience. तो आपने बोला ठीक है यार control approach तो है, but for inventory I'm going to do 100% substantive. उसके मैं सब चीजें cut off भी 100% करूँगा. Everything I will do 100%. Even मैं count भी 100% खुद करूँगा. Whatever your decision is. तो specific circumstances हो सकते हैं. Combined risk assessment का result हो सकता है. Now what is a combined risk assessment? Anyone? What comprise of CRA? We call it CRA in firm, so I'm just using that term. What is a combined risk assessment? It's a combination of what? Inherent risk, yes. Control risk, detection risk. Yes.
So inherent risk, obviously we all know it's a very bookish definition. वो practical life में याद नहीं रहती है कि भाई ये CRA होता क्या है. But it's a very simple thing. It's inherent risk, control risk, and a detection risk का multiple होता है. Every firm has their own methodology based on कि भाई आपका CRA low है, high है, higher है, very low है, whatever it is. उसके base पे आप अपने sample selection करते हैं. So that is very important to know कि what your combined risk assessment is. We cannot directly reach to a conclusion कि यार मैं client पे गया पहले दिन मैंने TOC किया मैंने बोल दिया कि हाँ यार यहाँ पे मैं 100 items करूँगा. That 100 items should have some backing or some basis behind those. So that is the combined risk assessment, which is very important to understand. Okay, this is a summary of what we have just discussed. That approaches for selecting items क्या हैं, obtaining audit evidence के क्या हैं. First, 100% examination, audit sampling, and selecting specific item based on amount, value, and risk. वो जो मैंने बताई थी. Now, audit sampling के अंदर then we have further breakup of statistical sampling and judgmental sampling. और उसके ऊपर अब हम भी बात करेंगे. But this is the crux of the discussion we have. That 3 approaches are there, and from those 3 approaches, one approach has further subset of definitions, which is the audit sampling. Okay, selecting. अच्छा पहला वाला हमने क्या किया था? Selecting all items in the population. We may determine that it is appropriate to examine the entire population, which makes up a significant class of transaction or a significant account. Now, what is a significant account? Significant account के अंदर 2 characteristics होने चाहिए. Significant risk तो हमने देखा था ये. Yes. It's a potential है उसके अंदर 2 चीजें ही होनी चाहिए. The magnitude and the likelihood. कि आपका मैग्नीट्यूड भी हाई होना चाहिए टू बिकम अ सिग्निफिकेंट अकाउंट. यानी कि आप एक कोई छोटा आइटम है अदर एसेट्स के अंदर अदर कोई चीज है वो है तो आप नॉट नेसेसरी दैट इज अ सिग्निफिकेंट अकाउंट. एंड देन द लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट इज आल्सो हाई. नाउ हो सकता है कि भाई आपका कैश एट बैंक बैलेंस है यानी कैश जो बैंक में रखा हुआ है उसकी लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट विल बी लोअर एज कंपेयर टू व्हाटएवर अगर कोई और आपका अकाउंट है तो उसका मैग्नीट्यूड एंड लाइक्लीहुड दोनों हो. उन पर्टिकुलर अकाउंट्स के ऊपर नॉर्मली हम कर सकते हैं 100% पॉपुलेशन का टेस्ट इफ that audit environment or the audit time frame and everything allows us to do. So obviously that will end up giving you more comfort as compared to sampling, but depending कि आप किस situation में हैं कितना काम कर सकते हैं. But normally इन 2 चीजों के ऊपर significant class of transaction और significant account balance के ऊपर we can do 100% and we usually do 100% when we can, when it is possible and time allows us. So when determining whether to select all items, we consider कि अब हमें ये देखना है कि भाई हम सारे items select करें भी कि ना करें. Profile of the population, how reliable the population is, how big the population is, उसकी completeness को आप ensure कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. Client ने आपको दे दिया कि 50 transaction है बस यही है तो आपने ये भी देखना है मैं 50 तो कर लूं ये ना हो कि 50 कुछ अनरिकॉर्डेड भी पड़ी हुई हो. तो reliability of that population is very important. Likelihood of deviation or misstatement within the population. Now you also, I'm not going to discuss those in detail. वो हर उसकी फर्म की अलग methodology के हिसाब से होता है कि आप likelihood of deviation को भी calculate करते हैं. When we decide to perform a sampling, we also have to see that how much percentage deviation you are expecting to absorb. 5% of आपका planning materiality है अगर उससे ऊपर हुआ तो मैं extended procedures करूंगा. 10% है 25% है historical data पे depend करता है. तो आपने ये भी देखना है कि भाई 100% मैं कर रहा हूँ लेकिन अगर मैं ये देखूं past के अंदर मैंने जब sampling की थी तो there was always 20-25% deviation of errors whenever I selected on sample basis. Obviously there's no point कि मैं जो 100% करूं because that population itself is giving me an error. So there is no point कि मैं उस population को 100% करूं. Then probably I'll end up doing some extended or additional procedures. And the ability to test all items, which is बताया, which is the time and effort we have to put in. So can you think of any account class or account balance that we usually do 100% testing of that? Yes, legal and professional. Why we do that?
because of significance, right? There's a significant risk attached. From that, you can identify there's any legal cases which the client have missed to share with us. Okay, let's say the list of lawyers which we have it. When we vouched it, we found out that 2 lawyers was not mentioned in the list of lawyers. Okay, we need to send them also confirmations. We came to know that late filing was done. Okay, there's a non-compliance with the legal laws and regulation that can also be there. Okay, so that's the reason, because of the significance of that account, we need to vouch 100% of legal and professional. Okay, that's the best example we have. And further, another example could be the donations, जो expense में आते हैं. क्यों दो चीजें हैं उसके अंदर, because there is a requirement of giving disclosure above certain amount, and also where the donee is or the directors are interested in that donee company. So obviously normally वो भी हम donations को भी 100% इसलिए कर रहे होते हैं, just to see कि भाई इसमें कोई legal non compliance जो है वो ना रह जाए. Yeah. Fixed asset addition depending, अगर वही बात है, अगर 10 items ही add हुए हैं तो you can do it, but in a manufacturing concern you cannot do 100%. You have to apply some technique. वो हम discuss करेंगे. Okay, selecting key items in the population. First हमने देखा कि selecting all items. Now we are talking about selecting key items. We may decide to select specific items that have different characteristics from the rest of the population and individually significant. Now, key items के दो चीजें हो सकती हैं. One is based on the risk and one is based on your value. Now, risk के ऊपर भी आप ये कर सकते हैं कि आपने ये देखना है कि भाई मुझे ये particular area है, for example ECL है, आपका expected credit loss है, कि मैंने यार इसको, because it's a first time implementation थी, IFRS 16 जब first time implement हुआ, मैं कहा नहीं भाई जितनी भी additions हुए हैं IFRS 16 में rent contract during the year, I have to do it 100%. So आपने उसको risk base के ऊपर कर दिया. Secondly, आपने बोला कि नहीं यार ये जिस तरह मैंने डोनेशन का बताया कि डोनेशन तो चले वो तो उसमें फुल में चलेगा. फिक्स एसेट्स का आपने इस तरह बताया कि CWIP से फिक्स एसेट में ऑपरेटिंग के अंदर कोई ट्रांसफर हुए हैं, तो आई हैव टू सी कि भाई व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ दो CWIP इनटू, कि उसका इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट होता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है कि नहीं होता है, मटेरियल ट्रांसफर्स हुए हैं, तो आई कैन पिक एंड चूज कि मैं 100% करूंगा. सो selecting key item is also an allowed approach which you can do along with all items, along with sampling, or selecting key को भी कर सकते हैं, but the rationale and the basis should be very strong that why you are doing the key items only and not the 100%, or not applying the allowed or the suggested sampling techniques. क्योंकि key items का risk सिर्फ ये हो सकता है कि आपने बड़ी-बड़ी चीजें तो देख ली, specific areas देख लिए, लेकिन the entire population is untouched, और वो उसमें बाकी सब चीजें जो हैं उसमें पीरियड भी कवर नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल आपके CWIP से ट्रांसफर हुए फिक्स एसेट में टुवर्ड्स द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, आपने वो तो देख लिए, लेकिन थ्रू आउट द ईयर जो एडिशंस हुए वो आपने मिस कर दिए. सो यू हैव टू इंश्योर दैट की आइटम्स डज नॉट गिव यू दैट रिस्क दैट यू आर गोइंग टू मिस द एंटायर पॉपुलेशन कवरेज and the period as well. And it's Salman said that, you know, we when we are talking about key items, basically based on your testing threshold. Okay, so let's say that there's only one amount which is appearing under your testing threshold, let's say. Okay, it's 1 million, let's say you've tested. The rest of the amounts are basically, let's say 900,000, 800,000, 700,000, but that's not above your testing threshold. But for those which are closer to the testing threshold, the best approach and best practice is that you do the inquiries of that and you at least document the nature of that. Okay, so at least you can get the comfort what it's basically appearing in the CWIP, let's say. Okay, that's really important for us. You cannot just leave it that, okay, fine, it's not under my testing threshold, I don't need to worry about other all items. So which are closer to the threshold, testing threshold, at least you make the inquiries of that. Another example can be 1 million amount of paying CWIP, another are like 100 rupees, 50 rupees, let's say any nominal amount, 20 rupees, 20,000, let's say. So you should not be worried about it, because that's obviously would be less than your sad item, you can say, or that can be immaterial for your audit. Yeah. Yes, that's a very good example. Obviously, key items से आपकी coverage पूरी अगर हो रही है significant, so you can always do that. Again, depending upon the situation you are in, whether you can do it or not.
अगर कर सकते हैं तो ऑब्वियसली जितना एक्सटेंड बढ़ाएंगे उतना रेगुलेटर के सवालों के जवाब कम देने पड़ेंगे, तो Yeah, इट्स बेटर टू yeah, डू that's right. as much as you can, but obviously you have to be practical enough to see कि भाई कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. So items which are basically lower threshold, at least inquire and document the nature. That's important. That should be in your working paper. Okay, now audit sampling. अच्छा, audit sampling में एक चीज जो जहन में आती है कि भाई सैम्पलिंग जो है सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स रिलेटेड है. It's not actually audit जो whether performing test of control or test of detail. We may decide to apply a sampling technique. अच्छा, test of control में क्या basis हो सकते हैं? Again, control environment पे depend करता है, population पे depend करता है. I'll give you an example के चलें वो मैं आगे एक example है उस पे आऊँगा मैं. And then we have test of detail. Test of detail is actually the substantive approach. Now standard, and I'm sure आप लोगों की firms की methodologies भी हैं which are more or less same for everyone because वो drive तो auditing standards ही हो रही होती हैं. तो उसमें भी यही है कि we may decide to apply sampling technique to obtain evidence. अच्छा, purpose क्या है? अब you cannot have a absolute assurance. You have to be reasonable assurance के लिए आपको reasonable basis लाने हैं. Audit sampling does not give you 100% satisfaction that your work is done correctly, but it should be reasonable enough to give you satisfaction. तो ये चीज बहुत important है कि we have to be reasonably sure कि whatever the result is, it cannot be 100% satisfied. तो ये चीज को आपने देखना है. We use audit sampling when the population we plan to test consists of large quantity of individual item. Obviously इस तरह आपने बताया कि large quantity of large volume अगर है, quantity कम है, तो एक अलग ही बात है. लेकिन आपके पास large quantity of individual items है, 10,000 items है, तो obviously you have to apply your audit sampling technique, right? Okay, audit sampling. When we determine audit sampling is appropriate, we consider the objective or the audit procedures, which we have decided that whether the objective is to get comfort on the numbers or the risk, whether the objective is to get 100% satisfaction or reasonable satisfaction. It all depends upon your client acceptance procedures, your preliminary risk assessment. Now, whatever the objective is, उसके हिसाब से ही आपने audit sampling को आगे correct करना है. Types of deviation or misstatement, this is very important. And this normally derive from historical data, that what we have performed in past, what results we have achieved from those audit sampling, whether they were deviations, whether they were material misstatements. If it is a first year audit, obviously it all depends that what information you have got from the previous year auditors audit report or board letter or management letter, whatever. तो वो आपने देखना है कि आपने कितना ज़्यादा absorb कर सकते हैं deviation and misstatements. Characteristics of the population and nature of the population. For example, characteristics of population की example मैं आपको देता हूँ कि we have account receivable ledger. Now we have debit balances appearing in that and credit balances appearing in that. Debit balances क्या हैं? Obviously it's a sale on credit which you have done. और credit balances क्या हैं कि आपने advance लिया हुआ है customer से for future sale. Now if I apply a audit sampling on this population, मेरे पास इसमें फॉर एग्जांपल 100 आइटम्स हैं, 20 वो एक हैं और 80 एक हैं, वो तो मुझे एक नंबर दे देगा ऑडिट सैम्पलिंग के भाई आपने ये 15 करने हैं. उस 15 में यू विल एंड अप सेलेक्टिंग डेबिट एंड क्रेडिट बोथ, व्हिच इज रॉन्ग बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग विल डेफिनेटली बी डिफरेंट इन बोथ केसेस. एक के अंदर आपने देखना है कि भाई आपका रिसीवेबल सही है कि नहीं है, एक के अंदर आपने देखना है जो आपने एडवांस सेटलमेंट बाद में हुई है, सेल रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई है. तो दोनों के ऑब्जेक्टिव, एक रिसीवेबल है एक पेएबल है. तो यू हैव टू सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स और होंगी जहां पे डेबिट क्रेडिट दोनों आ रहे होते हैं, डिफरेंट नेचर्स. नॉर्मली एक्सचेंज गेन और लॉस है, वो भी आप देखें तो उसके अंदर भी अब एक्सचेंज गेन और लॉस के अंदर आपके रियलाइज गेन्स भी आ रहे होते हैं, अनरियलाइज भी आ रहे होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ रहे होते हैं, उन सब का नेट बैलेंस आ रहा होता है. यू हैव टू डिफरेंशिएट and identify what exactly the population is and what is your objective. वो population आपने पहले सही करनी है and then you have apply the audit sampling on that. So ये characteristics and nature जो है ये बहुत important है जो आपने देखनी है. Example इसकी एक और भी है कि we are not able to detect the understatement of account by sampling the recorded items. अब आपका purpose ये है कि आपने test of unrecorded liability करना है. आप क्या करेंगे? आप ईयर एंड से पहले सारी रिकॉर्डेड लायबिलिटी देख के टेस्ट कर लेंगे. यू कैन नॉट गिव अ कंक्लूजन के
अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का टेस्ट हुआ। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के लिए आपने क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट अ पॉपुलेशन फ्रॉम सब्सिक्वेंट पीरियड। जो एक्चुअल कैश डिसबर्समेंट्स हुई हैं सब्सिक्वेंटली, वो आपने देखना है कि वो किस पीरियड में थी, वो इस पीरियड में तो नहीं रिकॉर्ड होनी चाहिए। सो आपका टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने अंडर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को रिकॉर्डेड आइटम से चेक नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी आर लुकिंग टू डिटेक्ट ओमिटेड अमाउंट्स, राइट। अच्छा, उसमें क्या होगा, वो इससे मैंने कहा, इन एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग प्लान फॉर डिटेक्टिंग सच वुड इन्वॉल्व सेलेक्टिंग आइटम फ्रॉम सोर्स व्हिच omitted amounts are included to illustrate subsequent cash disbursement may be sampled. So you have to very clear कि भाई आपका objective क्या है, आपकी population की characteristics क्या है, और आपके test का purpose क्या है। वो करने के बाद you have to be divide the population accordingly and then perform and design the procedures. Procedures क्या करने, we are not going to discuss those, but आपकी population की characteristics समझना बहुत जरूरी है। Okay, any question, any प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और डिफिकल्टी आप लोगों ने कभी फेस की हो सैम्पलिंग में? कोई अगर कुछ हो तो बीच में बताते रहिएगा, जिस तरह कोई एग्जाम्पल्स हमारे भी जहन में आएंगे तो आपको बिल्कुल बताएंगे। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल मैं एक और आपको बताता हूँ कि किसी ने यहाँ से पूछा था रेवेन्यू के ऊपर, आपने पूछा था शायद कि रेवेन्यू के ऊपर किस तरह टेस्ट होने चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल बैंक की एग्जाम्पल आप देखें, अब बैंक में देयर आर डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू। क्या क्या है? इंटरेस्ट इनकम ऑन एडवांसेस है, इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टमेंट्स है, डिविडेंड इनकम है, फी कमीशन एंड ब्रोकरेज है। एवरी पॉपुलेशन हैज अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, एवरी रेवेन्यू स्ट्रीम इज डिफरेंट, बिकॉज डिविडेंड इनकम का क्या है, डिविडेंड इनकम का टेस्ट क्या हो सकता है कि आपने डिविडेंड वारंट देखना है। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का क्या हो सकता है कि ऑब्वियसली उसमें आपने रिटर्न देखने हैं, वॉट एवर। एडवांसेस का डिफरेंट होगा, उसमें आपने सस्पेंडेड इनकम भी देखनी है। फी कमीशन का अलग होगा, उसमें आपने कट ऑफ भी देखना है, उसमें आपने ये भी देखना है आपका कितना शेयर है, आप आगे कितना पास ऑन कर रहे हैं अगर आप कंसोर्शियम के अंदर काम कर रहे हैं। एवरी रेवेन्यू स्ट्रीम इज डिफरेंट। तो आपने ये पॉपुलेशन की एग्जांपल ये भी है कि आप ये नहीं कर सकते कि आपने सारे रेवेन्यू का लेजर लिया सब मिक्स का और आपने सबके ऊपर सैंपल लगाया और उसमें से आपने बोला मैं रेवेन्यू टेस्ट कर लिया, बिकॉज द टेस्टिंग प्रोसीजर्स यू आर गोइंग टू अप्लाई शुड बी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। इनकम के ऊपर आप कुछ और देख रहे हैं, अब हो गई आपने जब डिविडेंड इनकम को भी उस पॉपुलेशन में शामिल कर लिया और डिविडेंड इनकम के ऊपर आपने 2 टेस्ट कर लिया, बोला कि भाई मेरी 25 ट्रांजेक्शन होगी, तो वो 2 टेस्ट जो है ना वो बाकी रेवेन्यू स्ट्रीम को कवर नहीं कर रहे हैं। तो यू हैव टू डिफरेंशिएट and make separate set of population and then select the items from those. So this is very important कि आप हर किसी की रेवेन्यू स्ट्रीम और ऑब्जेक्टिव को भी समझें। और इसी तरह आपके एक्सपेंसेस के अंदर भी बैंक्स के अंदर होते हैं, डिपॉजिट के ऊपर अलग है, आपने कोई बोरिंग, आपका कोई सबऑर्डिनेटेड लोन है उसके ऊपर एक्सपेंस अलग है, तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर भी हो सकते हैं। Okay, appropriateness of sampling. When we select a sample from a population, our objective is to obtain a representative sample from the population. जिस तरह मैंने अभी बताया आपको कि representative sample, dividend income cannot be representative sample of the entire revenue stream of banking income. ठीक है? That has to be representative of the dividend income only. इंटरेस्ट इनकम का जो आप टेस्ट कर रहे हैं दैट सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटरेस्ट इनकम ओनली। तो आपने अलग अलग इनको, अब ये मैं बहुत बड़ी एग्जांपल बैंक की, मे बी इट्स नॉट वेरी रेलेवेंट फॉर 80-70% ऑफ क्लाइंट्स व्हिच वी डू, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें कोई अगर नॉर्मल कंपनी है वो 2-3 सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, कोई फार्मास्यूटिकल है, फार्मास्यूटिकल आपकी टोल मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को भी दे रही है, तीनों के अंदर कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट हो सकते हैं, टोल का डिफरेंट होगा, एक्सपोर्ट डिफरेंट होगा, सब डिफरेंट होंगे। तो आपने उसके सैम्पलिंग भी डिफरेंट करनी है, आपने उसके कट ऑफ भी डिफरेंट करने हैं, वॉकथ्रू भी डिफरेंट करने हैं। तो जब पॉपुलेशन की सिलेक्शन की बारी आएगी देन अगेन यू हैव टू इंश्योर कि आप सबके कैरेक्टर्स को देखते हुए करेंगे। एक सिलेक्ट करके यू कैन नॉट से दिस इज अ representative. So we have to be sure that whatever the sample selection is, it should be a representative of the entire population, and then only we can conclude कि यार ठीक है population is appropriate for sampling. अभी हम sampling technique पे sampling procedures पे नहीं आए, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि sampling जो है appropriate कब हो सकती है। जी पॉपुलेशन नहीं होगा।
नहीं, आपका सैंपल साइज 32 आना नहीं चाहिए ना उसके ऊपर। देखिए जब आप पॉपुलेशन उसके कैरेक्टरिस्टिक जब देखिए होता क्या है, सैम्पलिंग टूल पे अभी हम आएंगे और सैम्पलिंग टेक्निक पे आएंगे, लेकिन सैम्पलिंग का जो नंबर निकलता है वो उसके अगर बेसिस आपके सही हैं, स्टैटिस्टिकली आपने उसको सही अप्लाई की भी है सैम्पलिंग टेक्निक, तो वो जो भी नंबर निकलेगा दैट विल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। अब देखें सैम्पलिंग रिस्क है, सैम्पलिंग रिस्क अपनी जगह रहेगा, वो भी हम कवर करेंगे। सैम्पलिंग रिस्क of under reliance will always be there, but it can be reduced, it cannot be eliminated. सैम्पलिंग जब भी आप करेंगे इट कैन नॉट एलिमिनेट योर रिस्क, वो उसी वक्त हो सकता है जब 100% पे जाए। हाँ, आपका रिड्यूस जरूर हो सकता है, और प्लस आपने अगर टेक्निक सही यूज की है, पॉपुलेशन को सही टेस्ट किया हुआ है, आपने उसके इनपुट्स जिसमें अभी हम करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट अ सैंपल, वो अगर आपने सही यूज किए हुए टू अ रीजनेबल लेवल, यू विल एंड अप इन गेटिंग अ acceptable result. अभी शुरू में हमने कहा कि we cannot get an absolute assurance from sampling. We have to be reasonable basis and reasonable assurance. So जो 32 आया है, 50 आया है, उसमें अगर हाँ, और अब आपने 50 किया, जो शुरू में उन्होंने बात की थी आसिफ ने कि if you end up doing a test of control या test of detail भी, उसमें कोई error आ गया, then you have to select another. फिर आ गया, फिर another. Then you have to stop somewhere and say कि नहीं, there is some issue with the entire process. I will end up in changing my audit strategy. वो एक exceptional circumstances में आएगा. Okay, if we conclude that a sample selected was not representative of population, we revise our sample selection. वो जिसमें मैंने बताया कि even throughout the every stage of the audit, even when we are at the conclusion stage and we saw that okay fine यार हमने एक revenue stream उस वक्त miss कर दी थी, and if we had put that revenue stream on our entire population, the result would have been different. Then you have to revise your audit sampling. So it has to be reassessed throughout the process, throughout the audit process. And based on the continuous result which you are getting, you have to revisit your audit strategy in terms of sampling and see कि आपका रिजल्ट जो है वो सही है कि नहीं है। इसमें एक चीज आई थिंक हो सकता है आप लोगों ने कल भी शायद आई एम नॉट श्योर पढ़ी है कि नहीं, विच इज वेरी प्रैक्टिकल और हमें बहुत मुश्किल भी होती है ऑडिट के अंदर। when we design our when we calculate our planning materiality at this planning stage, हमारा PM आ जाता है materiality 100 रुपए आ गई है, बाद में हमने ऑडिट किया, we end up getting ECL का प्रोविजन करा दिया, स्टॉक का करा दिया, सब करा दिया, और आपने 100 की प्लानिंग मटेरियलिटी की बेस के ऊपर सैम्पलिंग करके ऑडिट कर दिया है। जब हम ऑडिट रिपोर्ट साइन करने जा रहे हैं, पता चला यार वो 100 अगर मैं आज कैलकुलेट करता वो तो 50 रुपए रह गए, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने उस प्रॉफिट में इतनी सारी एडजस्टमेंट्स करा दी हैं। Now what we have to do, we have to recalculate the sampling and see कि हमने कितना अंडर परफॉर्म किया हुआ काम, और ये it's a very practical and we have faced and like this issue in our global reviews and everything, because जब audit final हो रहा होता है तो nobody is very bothered कि यार what numbers I have used in PM and TEA, और उस वक्त कोई नहीं देख रहा होता। So this is very important कि before signing off we have to revisit and see the sample which we have used by using the planning materiality at the initial planning stage is still valid or not. If it is not, you have to end up doing additional work. Because it will affect your sample size for sure, right? Because if the thresholds are changed, everything is changed, then definitely sample size needs to be revised. At times, it depends upon the कितनी आपने adjustments करा दी हैं, तो बेहतर adjustment ना कराएं। That's why it's really important to understand the business, understand the business environment, and definitely that's the reason you have to more emphasize on test of controls and all, because then you get the idea that the error of chances that is very high, let's say, or you expect that there will be an adjustment. So at the time of planning stage also you slush your materiality. Rather than just focusing on absolute number, you said, okay, let's say 1 billion, you say just slush it to 80% and you stress that. ये एक strategy होती है जो which we use कि भाई हम starting point we should keep as low as possible within the allowed. ये नहीं कि बिल्कुल ही मैं बोलूँगा मैं 100% ही करना है. If our methodology is allowing us कि यार use 75% of planning materiality or 50% depending on circumstances, we will try कि यार इसको 50% पे कर लें, क्या बाद में कोई adjustment आएंगी तो we will have some room available. But it is very important for all of you to note कि always revisit your planning materiality when finalizing the audit and see what additional procedures you might end up in doing. Yes. Yeah. Yes. We have to. Yes. Do that.
तो पैरामीटर चेंज नहीं हो रहा सर, पैरामीटर देखें, मटीरियलिटी इज चेंज हुई, बिल्कुल, yes, so you have to end up in doing additional work before finalizing, because जिस number पे it will be time consuming and costly. yes, Yeah. इसी वजह से क्या कहते हैं कि जो मैं कह रहा था कि throughout the audit we have to monitor it very closely, especially कहाँ पे आता है, यहाँ पे कोई बड़ी adjustments आ जाए end के अंदर, देखिए वरना अदरवाइज रूम अवेलेबल होता है कि अगर कोई एडजस्टमेंट आ भी जाए तो आपके पास इतना रूम होता है कि यार मैं 30 ट्रांजैक्शन की हैं, अगर मैं ये अब करता तो शायद 40 हो जाती हैं, आप 10 और कर लेंगे, ये उस वक्त आएगा मसला, स्पेशली जो आता है व्हाट आई हैव सीन इन बैंक्स ऑडिट. Excuse me, actually I am talking about monetary value sampling. So I'm talking about the specific item I have selected for as a sample. Yeah. So if I apply another materiality level, so it might change. Yeah, it will change. Suppose I have checked the invoice number 102. Yeah. Otherwise, I have to verify invoice number 140. Yeah. So how's that? Well, basically, there's sampling has two criteria. The key item, that's what we have discussed. One is key item, which is based on your thresholds. One is representative sample, which does not have any concern with the testing threshold. It's all representative, and you select based on the random sampling or MUS or something like that. When we talk about MUS, which will be coming in the next slide as well, but we can just touch based on that. For example, we are discussing account receivable balances. All right, that's one of the best example of MUS basically, because you are more concerned about the closing balance of that. So in that, basically, you assign a testing threshold, and you decide that this is my testing threshold, and above that will be all my key items, and the remaining will be representative samples. And for representative sample, you go for random sampling basically. So yes, you're right. Once you have changed your materiality, there's a key message that when you are doing the planning work, when you are understanding the process of any, you can say for revenue, let's say for example, or any other significant score, that's the reason that you do walkthroughs and then you do tests of controls to decide that, okay, the operating environment is effectively. One of the biggest example, which is very common these days, is basically exchange rate. Okay, let's say the company is, purchasing goods from outside the world, and you have to make dollar payments. So definitely you have one expectations that considering the environment and the situation of economic condition of the country, you are expecting that there will be exchange loss in the financial statements. Okay. So these factors need to be catered at the time of planning, and you have to set up your expectation, and based on that, you decide your materiality. And that's the reason why that considering all these factors, you slush your materiality as well, rather than just focusing on the big number that, okay, I got the 1 million now, I'm realized that I have to do less audit. No, you have to slash it because you have an idea that anytime that there can be exchange loss, there can be an impairment, there can be a default of customers as well that you have to write off. I am talking about that, say, I am verifying account receivables, right? Yeah. There are 10 customers. Yeah. Eight to or what? So when I apply monetary value sampling, suppose Yeah. I select the first account receivable I selected was Yeah. B customer. Yeah. Customer B, according to my Yeah. materiality level that I determined Yeah. at the initial stage. Yeah. Now, after the conclusion of the audit, materiality significantly changed. Yes. So when I apply the monetary value sampling again, Yes. so now I will have, I should have selected customer C Yeah. instead of customer B. Yeah. Initially, I selected customer Yeah. B. Yeah. So बिल्कुल सर, आपको ये करना my पड़ेगा. whole schedule will change. Yes, Yes. that's what I'm saying. Yeah. That's why you have to be very cautious that you set up your materially according to the situation and understanding of the business basically. Yeah. And it can be end of that you have to do B also and C also. You have to increase the sample size also. Okay, sampling risk, as I said, के जितना भी आप sample selection कर लें, the risk will always be there. Now, two types of risk actually. One is controls are operating effectively, और आप ये conclude करेंगे नहीं ये तो operate effectively नहीं कर रहे हैं. You can like गलत जिससे कहते हैं ना risk of rejection जिसको हम लोग कहते हैं कि आपने सही चीज को reject कर दिया है तो that risk will always be there, and otherwise other way around it's के operate कर रहे हैं sorry नहीं कर रहे हैं और आपने कह दिया कि operate कर रहे हैं. तो the risk sampling risk will end up eventually in audit risk definitely. जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं कि sampling risk जो है
वो end up audit risk के अंदर ही होगा. तो if you have correctly calculated the sampling techniques, so obviously your risk can be reduced, but it cannot be eliminated. As I said, कि risk of incorrect acceptance हो सकती है, and risk of incorrect rejection हो सकती है. Now this is when we have selected the sampling technique. कि भाई हमने population में से sample select कर लिया है, और now we are saying कि भाई उसके बाद procedure सही perform करने के बाद still we end up in saying कि there is a risk. Now what is the other type of risk? Is a non-sampling risk. कि आपने conclusion for any reason not related to sampling risk कि population selected जो है वही गलत थी to start with. तो आपका जो सैम्पलिंग रिस्क है वो तो बहुत बाद में आया, ये तो आपका नॉन सैम्पलिंग रिस्क ही हो गया कि आप द पॉपुलेशन फ्रॉम व्हिच यू हैव सिलेक्टेड द आइटम इटसेल्फ वाज नॉट करेक्ट. सो रादर देन रीचिंग टू द कंक्लूजन कि मैंने सैम्पलिंग के बाद एक रिजल्ट पे आया हूं, मैं पहले ही कह रहा हूं कि मेरा रिस्क मौजूद है फ्रॉम इनकरेक्ट सैम्पलिंग. ऑडिटर फेल टू इंक्लूड द एंटायर पॉपुलेशन इन द सैंपल, जैसे मैं बताया कंप्लीटनेस के ऊपर है. Audit procedures that are not appropriate for specific and failure to recognize deviation or misstatements. जब ये चीजें हमने की हैं तो it's basically suggesting that the starting point of the sampling exercise itself is not correct. Sampling risk क्या है कि हमने सब कुछ सही किया है, but still we have a risk कि या तो गलत reject कर रहा हूँ या गलत accept कर रहा हूँ. यहाँ पे ये हो रहा है कि मैंने जो sampling use की है उसके basis ही गलत हैं, तो we'll call it a non-sampling risk. Okay, so far we have discussed के कौन सी टेक्निक आपने यूज करनी है, रिस्क क्या है. अब हम ये देख रहे हैं कि हाउ टू डिटरमाइन द सैंपल साइज. अच्छा, सैंपल साइज सिलेक्शन के there obviously you all know as per the auditing standard also that there are two techniques. One is statistical sampling, is non-statistical sampling. Statistical sampling, as the name suggests, based on scientific theories, stats behind it and everything. Or non-statistical is a judgmental technique. Judgmental, again, it's not necessary कि everything is कि भाई मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूँगा, वो वाली चीज नहीं है. Judgmental के अंदर भी we have certain techniques and bases which we have to use, वो हम discuss करेंगे. But these are the two main techniques. Okay, statistical sampling may provides an opportunity to measure and control sampling risk. स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में सैम्पलिंग रिस्क कैलकुलेट करने का इसलिए आसान तरीका हो सकता है कि आपके पास बेसिस मौजूद हैं कि आपने कितने इंटरवल्स के साथ सैंपल सेलेक्ट किया है, किस पीरियड को कवर किया है. आप उसकी एक्सट्रापोलेशन जो है एक तरीके से आसानी से कर सकते हैं रादर देन द अदर, वो भी हम कवर करेंगे. अ मोर ऑब्जेक्टिव बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज. एंड स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूजेस सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम विदाउट बायस. अब बायस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जजमेंटल में बायस बहुत ज्यादा आ जाता है कि यार बैंक्स की ब्रांचेस मुझे सेलेक्ट करनी है. फॉर एग्जांपल मैं बोलूं यार कोयटा तो नहीं जाना मुझे, सही है, मैंने कोयटा को तो साइड पे, यार मुझे उधर नहीं जाना, मैं काम करता हूँ कश्मीर की 10 उठा लेता हूँ, सब कश्मीर चलते हैं. सो दिस इज अ बायस व्हिच इज नॉर्मली देयर इन जजमेंटल. स्टैटिस्टिकल जब आप करेंगे तो ऑब्वियसली आप एंटायर पॉपुलेशन बैंक की 1000 ब्रांचेस उठाएंगे एंड देन यू हैव टू सी कि भाई मैं इसको ज्योग्राफिकल उसमें डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, मैं मॉनिटरी वाइज भी करता हूँ, मैं रिस्क वाइज भी करता हूँ, इंटरनल ऑडिट से रिस्क रिपोर्ट लेता हूँ, उसमें हाई रिस्क कौन सी है, लो कौन सी है, डिफरेंट क्राइटेरिया बनाऊंगा एंड देन आई विल अप्लाई सम स्टैटिस्टिकल अप्रोच एंड सेलेक्ट. उसमें कोयटा भी आ सकती है, हो सकता है ना भी आए, तो कश्मीर हो सकता है ना आए, तो कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, बट द बायस्ड एलिमेंट विल बी एलिमिनेटेड. नहीं हो पाए. ओके, ये हमने कर लिया. प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवैल्यूएट सैंपल, दैट्स फाइन. आगे आ जाओ. Primary benefit of statistical SSI it can be quantified, and we may inadvertently assume that the population is homogeneous. Now, what is population is homogeneous? के आपने एक इसमें रिस्क क्या है? इसमें रिस्क ये है कि आपने ये assume कर लिया कि सारी population के characteristics same है, which cannot or which ideally is not the case. It can be, but ideally it is not. जिस तरह मैंने अभी income की banks में बात की, characteristic different हो सकते हैं, expenses में characteristic different हो सकते हैं. तो there is a risk even in statistical that you are selecting a population from the entire list, assuming that they have the same characteristics, which is a risk even in statistical. Okay, judgmental sampling allows to use a professional judgment to select number of items. अच्छा, इसमें जो अंडरलाइन चीज है वो इंपॉर्टेंट है. वी सेलेक्ट द नंबर ऑफ आइटम्स दैट वी बिलीव प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. नाउ जिस तरह मैंने कहा, जजमेंटल डज नॉट अलाउ और डज नॉट गिव यू अ लेवरेज के
मेरा जो दिल चाहेगा कि मैं ये ब्रांच नहीं उठाऊंगा, वो नहीं उठाऊंगा, ऐसा नहीं है. जजमेंटल में भी यू हैव टू बी श्योर कि प्रोफेशनल जजमेंट हो. इट्स नॉट ओनली जजमेंट, इट शुड बी प्रोफेशनल जजमेंट. एंड सेकेंडली, वी बिलीव दैट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. यानी कि आप फिर भी जजमेंटल यूज करके भी यू एंड अप इन गिविंग योरसेल्फ अ कंफर्ट कि मैंने जो बेसिस यूज किए हैं वो इस तरह दे आर नॉट इन द एयर और बस मैंने ऐसे नहीं कर लिए. देयर आर सम रीजंस बिहाइंड दैट. When we use judgmental sampling, we cannot quantify the sampling risk, as I said, and still want to be able to draw conclusion about the entire population. तो ये risk वहाँ पे रहेगा. क्यों रहेगा? क्योंकि आप quantify नहीं कर सकते हैं और the same time quantify किए बगैर you want to be sure that the basis which I am using is reasonable. So this judgmental is something which ideally I would say we should try to avoid, but obviously when we cannot end up in doing some statistical because of some reason or something, so we can always go to judgmental. Yeah. Okay. Yes. आगे. Okay. We exercise judgment to determine the number of items. ये हमने पढ़ लिया है. ठीक है. branch की selection जिस तरह मैंने बताई जजमेंटल हो सकती है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप नहीं हो सकती, लेकिन जजमेंटल में भी आपने फिर कुछ क्राइटेरिया डिफाइन करने पड़ेंगे. एक तो ये ना कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि भाई let's say you've picked up the one more item. Okay, you said based on professional judgment, I want to pick that item. You heard the news that one of the, let's say, shipping line, we take an example of shipping line, that this is going bankrupt, or let's say this winding up the operations in its own country. So that there is a chance that that this receivable will not collected. So you plan to send the confirmation to that customers. But let's say MUS has not given you that sample size. Yeah. Yes, because this is what is important here, that when you plan or you go for a judgmental sampling, or let's say you based on a professional judgment, you picked up something, you have to document the reason and rationale. Sorry? No, let's see. That's what I'm saying, that sample size जो judgmental के अंदर क्या होगा, उसमें जिस तरह हमने पहले भी देखा, that it should be enough to give us a comfort के we have a reasonable assurance. For example, मैं आपको देता हूँ कि agriculture loans हैं. अब आजकल unfortunately because of flood and everything, there is a high risk कि agriculture loans के default हों. Normally bank के अंदर you don't end up sending confirmations to agriculture sector because the volume is very low, chances of coming back the reply is also not very tested before. But हो सकता है आप बोलेंगे नहीं यार मैंने agriculture loan के अंदर इस sector में और इन areas में मुझे जो है confirmation भेजनी है. तो दिस इज अ जजमेंटल, लेकिन उस जजमेंटल के बेसिस है आपके पास. ऐसा नहीं है कि भाई मेरा दिल चाह रहा तो मैंने भेज दिया, नहीं चाहेगा अगले साल नहीं भेजूंगा. अब क्योंकि देयर इज अ रिस्क, आपने एक जजमेंट अपनी प्रोफेशनल लगाई और आपने वो प्रोसीजर कर दिया. तो जजमेंटल के अंदर भी आपको कंफर्ट इतनी आनी चाहिए कि आप प्रोफेशनली ये कंक्लूड कर लें कि यार ये जो भी रिस्पॉन्स इसका आएगा बेस्ड ऑन माय प्रोफेशनल जजमेंट विल बी सफिशिएंट फॉर मी. इसलिए वो जजमेंटल को थोड़ा सा ओपन छोड़ा हुआ है कि मतलब यू कैन ऑलवेज, I wouldn't say play around with that, but professionally you can evaluate and see the situation. Excuse me, sir. Yeah. Sir, in banks we have to cover 60% advances in selection of the branches. So how can we incorporate the judgmental sampling in that aspect? बिल्कुल, लेकिन 60% किस बेस पे? Monetary value पे. ठीक है, 60% तो straight है ना कि 60% loans and advances. तो आपने outstanding balances का 60% तो verify करना है. That is, there is no judgment. आपकी तो कोई judgment इसमें है ही नहीं, हमारी भी कोई नहीं है, बस आपको एक regulatory requirement है, कर दिया. But do you still conclude that the remaining 40% is also a representative of the 60%? No, because obviously there could be a chance कि जो remaining 40% है उसमें error हो और वो तो मैंने test नहीं किया. Nobody will allow you to say कि भाई मैंने 60% advances कर लिया तो मेरा audit opinion सही हो गया. 60% you are doing just because of a regulatory requirement. Now that 40% you have to cover, you cannot ignore it because हम करते भी हैं ये कि we cannot ignore it, but there you can apply some judgmental basis. वो judgmental basis क्या हो सकते हैं? जिसे मैंने बताया, आप agriculture sector को cover कर सकते हैं. आप internal audit की report लेके उसमें ये देख सकते हैं कि उन्होंने कोई बड़ी parties identify की थी जो इसमें नहीं है, या वो areas identify किए थे which could have high risk or not. Past experience के base पे कर सकते हैं. वो judgmental आप बहुत सारे basis use कर सकते हैं, but
60% itself will not be the representative of the entire population just because के regulator ने, अच्छा वो 60% में भी बड़ी एक ट्रिक है कि उसमें performing non performing दोनों होते हैं. तो non performing which is not actually appearing in your books, still you are saying यार मैंने तो टेस्ट कर लिया है, तो इसका मतलब मैं, तो वो भी एक रिस्क है. तो वो रिस्क को कवर करने के लिए it's better to increase your testing threshold, because वो 60 में से अगर 20% non performing loans हैं, they are not appearing in the balance sheet. आप उसका क्या करेंगे? आप ये बोलेंगे हाँ मैंने यार उसकी लोन फाइल देख ली है, कंफर्मेशन भेजी, जवाब तो आना नहीं है, तो मेरा 60% मैंने अपना प्रोसीजर कर लिया. दैट प्रोसीजर इज नॉट गिविंग यू एनी कंफर्ट एट ऑल, बिकॉज दैट नंबर इज इटसेल्फ इज नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट. तो आपने अपना एक्सटेंड तो बढ़ाना ही चाहिए वैसे भी. तो रिमेनिंग 40% भी आपको पूरे पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है. तो देयर यू कैन अप्लाई सम जजमेंटल बेसिस, इवन स्टैटिस्टिकल, वहां भी स्टैटिस्टिकल कर सकते हैं, मॉनिटरी भी कर सकते हैं, but better to apply some judgmental basis over there. देखिए की आइटम, मैं आपको बताऊं, की आइटम दो होते हैं. एक तो वैल्यू वाइज है कि आपने एक बोल दिया कि यार जितनी मेरी प्लानिंग मटेरियलिटी है उसका उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगी मैं उसको टेस्ट करूंगा, या उसका 50% से ऊपर जो अमाउंट होगी मैं उसको टेस्ट करूंगा. ये हो गया आपका की आइटम. दूसरा आपका की आइटम ये है कि यार मैंने कोई रिस्क आइडेंटिफाई किए. रिस्क आइडेंटिफाई क्या किए कि पास्ट एक्सपीरियंस मेरा ये था कि यार मुझे रिसीवेबल की कैलकुलेशन जो थी ECL, उसके अंदर जो है हमेशा मसले नजर आते थे. ये सप्लायर था या डेटर था, ये मुझे जवाब नहीं देता था, ठीक है, या इसके ऊपर मुझे कंफर्ट नहीं है, इसकी सब्सिक्वेंट नहीं आ रही थी, व्हाटएवर, तो मैंने उनको आइडेंटिफाई कर लिया. ये की आइटम्स हो गए. जजमेंटल इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द मॉनेटरी वैल्यू टू स्टार्ट विद. आपका एक जजमेंट ये है कि मुझे यार ये एरिया लग रहा है कि थोड़ा सा रिस्की है, मैं यहाँ पे अपनी पॉपुलेशन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ. या जजमेंटल में कहता हूँ कि यार ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन है, ठीक है, मैंने यार आज तक जो है बलूचिस्तान रीजन को टच नहीं किया है, मैं इस दफा जो है इस रीजन को टच कर लेता हूँ. नॉट नेसेसरी डिपेंडेंट अपॉन द मॉनेटरी वैल्यू, बट इट कैन बी ऑन योर जजमेंट. तो की आइटम्स एज द सेम सजेस्ट कि वो वैल्यू वाइज और स्पेसिफिक रिस्क वाइज होंगे. जजमेंटल स्पेसिफिक रिस्क वाइज नहीं होगा. जजमेंटल सैंपलिंग कर रहे हैं तो वहां तो कोई टेक्निक तो है नहीं. अब मेरे 3 क्राइटेरिया कि या तो मेरा जो कंबाइंड रिस्क है वो लो होगा, मीडियम होगा या हाई होगा. तो मैं क्या ऐसी पॉलिसी, उसको बायस को खत्म करने के लिए पॉलिसी बनाऊं कि मेरे ये तीनों उसमें मैं सैंपल साइज डिटरमिन करूं. से मैं ये कहता हूं कि जी अगर मैंने अपनी फर्म की पॉलिसी बना ली कि जी अगर रिस्क लो होगा तो मैं सेल्स का 20% चेक करूंगा, अगर रिस्क मीडियम होगा तो मैं 40% चेक करूंगा, रिस्क हाई होगा तो मैं मोर देन 50% पे चला जाऊंगा. तो इज इट ओके और नॉट? यस इट इज. और ये होती है, ये बिल्कुल होती है बेस्ड ऑन कंबाइंड रिस्क असेसमेंट, जो हमने शुरू में देखा कि CRA के रिजल्ट के ऊपर आपका डिपेंडेंट होगा. स्टैटिस्टिकल में तो ठीक है, आपने एक टूल यूज किए, उसमें एक रैंडम एक आगे हम आएंगे कि रैंडम सिलेक्शन क्या होती है और हैपेजेड क्या होती है, वो सब चीजें. जजमेंटल के अंदर नॉर्मली इसको हम कहते हैं ऑडिट रिस्क टेबल. ऑडिट रिस्क टेबल यही होता है कि आपका CRA अगर लो है तो एसेट साइड पे मैं इतना परसेंटेज ऑफ मटेरियलिटी काम करूंगा, पेबल पे इतना करूंगा. ये डिपेंडिंग अपॉन, आई एम नॉट श्योर कि इस वक्त मतलब बाकी जगहों पे किस तरह हो रहा है, लेकिन बहुत सारी फर्म्स में इस तरह ही के टेबल यूज होते हैं. Will it be accepted by the QCR inspector? देखिए If it's supported by proper justification, Yes. how you've determined your methodology To kill the bias. Yes, because we to have the to bias and yes. to have reasonable basis to Right. conclude that. Yeah. मतलब देखिए वो No, if we have a set policy, if we have a set Yes. policy and we are applying it to all clients. Yes, that's that what I is, yes, बिल्कुल. If you have a defined policy and following that, I don't think any regulator Yeah. can challenge you on that. हाँ policy नहीं है और मैं हर जगह different basis use कर रहा हूँ, तो वो एक मसला है. Right. ओके ये हमने आई थिंक शुरू में थोड़ा सा इसको पढ़ लिया है कि पॉपुलेशन क्या होती है, कि ऑब्वियसली पॉपुलेशन इज समथिंग वो जो जिसमें से हमें सिलेक्शन करना है, उसके बेसिस भी हमने देखे हैं. Appropriateness को we have discussed. I won't be going through in detail because obviously we only have half an hour left before lunch and 2 more topics. So ये आप लोग पढ़ भी सकते हैं, लेकिन I think we have already discussed कि what is the appropriateness of the population. We have to check. Okay. Completeness of the population is very important. कि आपने ये किस तरह इंश्योर करना है कि वो कंप्लीट है कि नहीं है. दैट प्रोसीजर वी आर नॉट गोइंग टू कवर ओवर हियर,
Obviously उसके लिए होता है कि IP टेस्टिंग होती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एंटिटी, जिसको हमने शुरू में देखा था कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस होता है, और भी डिफरेंट प्रोसेस होते हैं जस्ट टू इंश्योर कि व्हाटएवर द इंफॉर्मेशन यू हैव रिसीव फ्रॉम क्लाइंट इज कंप्लीट, और दैट कंप्लीटनेस ऑफ पॉपुलेशन, फ्रॉम दैट यू हैव टू सेलेक्ट द सैंपल्स एंड गो फॉरवर्ड. ठीक है, सैम्पलिंग यूनिट भी आई थिंक दैट्स नॉट समथिंग न्यू. आ गया राइट. Okay, judgmental sample size determination. जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि sampling is used to draw conclusion about population selecting items that we believe represent the characteristics of the whole population. ठीक है, तो आपने वही जो हम बात कर रहे थे कि nobody can give 100% satisfaction in judgmental sampling at least, but professionally whatever can satisfy us and that makes us believe that the characteristics of the population are covered from the judgmental sampling which we have taken, it is acceptable. Okay, statistical technique दो हैं. First one is quite simple, the monetary unit sampling, and the second one is random sampling. Now, monetary unit sampling, I think we have already discussed that we have to define some criteria कि amount कितनी रखनी है. Normally क्या होता है कि what I've seen in firms के once you decide the planning materiality, we say कि यार 50% of planning materiality or 75% the tolerable error, which is the nominal value कहते हैं जिसको standard में. तो एक आपने वो amount कर ली. अब normally होता है कि उस amount को ही आप कहते हैं कि यार ये मेरा जो है वो की आइटम है, इससे ऊपर जितने भी होंगे वो मैं सेलेक्ट करूंगा. तो मॉनेटरी ये भी हो सकता है, या यू कैन फर्दर रिड्यूस इट और फर्दर इंक्रीज इट, लेकिन यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज द मॉनेटरी यूनिट. You have to set the interval also. Anyway, random sampling. ठीक, ये सही है. इसमें आगे आ जाओ, पीछे ना, पीछे. ठीक, सही है. रैंडम नहीं, पीछे रैंडम. ओके. Random sampling is a technique used to determine sample size whereby each item in the population is given equal chance of being included. अच्छा, monetary unit में each item को तो chance नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो तो high value को chance मिल रहा है to cover your audit risk or whatever. Random में क्या होता है कि random में you break the population into different pieces. Randomly you select the starting point. Random का ये मतलब नहीं है कि number 1 उठा लिया, फिर number 5 उठा लिया, फिर 13 उठा लिया, ऐसा नहीं है. रैंडम सिलेक्शन में फॉर एग्जांपल यू हैव वन सेट ऑफ पॉपुलेशन हो, या अभी फर्दर ब्रेक नहीं है, आपने बोला कि रैंडमली, अच्छा वो रैंडमली नंबर एक टूल्स होते हैं डिफरेंट जो यूज करते हैं. रैंडम में उसने बोला 1 to 100 आइटम है कि आपने रैंडमली 5th आइटम इज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन एवरी 15th आइटम. नाउ दैट एवरी 15th इज अ रैंडम नंबर. वो नंबर कहां से निकलेगा? वो एक टूल से निकलता है जिसको रैंडम टेबल भी कहते हैं हम, और even we can use Excel also. There's a Excel command कर that सकते हैं. you can say random between 1 till 100 and just enter it, you will get the. तो random is by the name suggests, वो random हमेशा आप सुन के ही लगता है कि यार random तो जो भी दिल चाहे उठा लिया, लेकिन random is actually the starting point and the interval which is be defined in that population. अच्छा, अभी ये आ गया, ये तो हमने पढ़ लिया, random, systematic, ये भी हो गया. That's fine. Okay. Statistical में हमने देखा कि एक तो मॉनिटरी वाला आ गया, रैंडम वाला आ गया, उसके टूल्स डिफरेंट होते हैं. ऑब्वियसली उसको हम यहाँ पे मैं वॉक थ्रू तो नहीं करवा पाऊंगा, हर फर्म के डिफरेंट और बेसिस होते हैं और थोड़ा लंबा काम हो जाएगा वो. लेकिन हमने ये देख लिया कि आपके स्टैटिस्टिकल के अंदर कौन से मेनली दो एरियाज यूज हो रहे हैं, मेनली हो रहे हैं. वैसे तो डिस्कवरी सैम्पलिंग भी होती है और एक रिस्क एस्टिमेट सैम्पलिंग भी होती है, वो आप नहीं कर रहे. मेनली जो होते हैं वो आपके मॉनिटरी यूनिट और रैंडम होता है. अच्छा, नॉन स्टैटिस्टिकल इज समथिंग जिसमें हैपहैजर्ड सैम्पलिंग है. नाउ हैपहैजर्ड सैम्पलिंग क्या है? नो स्ट्रक्चर्ड टेक्निक इज यूज्ड, not appropriate when using statistical. Obviously there is a chance of conscious bias or predictability which determine the objective. Example of bias include avoiding difficult situation locations, selecting small items, etc. Haphazard, many for past many years I have not seen that we have used haphazard selection, and ideally it should not be used. You are just picking what you like. You said, okay, I just take this one, work will be done, as Salman said that we don't want to go to that location, let's go Islamabad, Kashmir, Marine, let's enjoy, so this is something as long as you can justify, you don't have any valid you can justification, you just pick up, just said okay based on your own choices.
Right, I think this is quite simple कि procedures क्या करने हैं, replacement item वही है कि if we are not able to get satisfaction from the sample we have selected, we have to replace it, again replace it. That's based on your judgment upon firm's methodology कि कितना आपने replacement करना है, where you have to conclude कि no, okay fine, sampling is not going to work, I have to go to substantive. This is just a summary of what we have discussed so far. Yeah. पहला वाला हमने पहले ही देख लिया था, 100% एग्जामिनेशन है, सैम्पलिंग है या स्पेसिफिक है, फिर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है, जजमेंटल सैम्पलिंग है, एंड देन वी हैव रैंडम एंड सिस्टमैटिक इन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, एंड जजमेंटल के अंदर नॉर्मली हमारे पास हैपहैज़र्ड आ जाती है. सॉरी, कहाँ पे होती है? रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो हम सेलेक्ट करते हैं. Yes. Basically, when you plan, let's say if you're doing MUS also, so what you do, you select the key item first, okay? You work on that, then definitely the rest of the population also you need to cover, okay? For that, what you do, you apply random sampling, okay? You use random tool to pick up the random, so at least you can cover the entire population, okay? You just not focus on key item. So we do that. Even let's say PP also, when you are doing property, plant and equipment, you are verifying the addition, let's say. So you notice that, okay, you have big numbers, which are key items based on your threshold, but definitely you have to cover small numbers as well. So for that also, you can, according to your firm's methodology, you can go for random sampling as well. Normally, random selection जो होती है, लेकिन दो टाइप की चीजें ना, test of control and test of detail है. Random selection normally test of control में ज़्यादा होती है, because you have to ensure कि भाई throughout the period covered है, without any bias of amount or everything. आपने random number लिया और फिर random हर महीने को whatever आपने जिस तरह define किया हुआ है, तो test of controls में random is frequently used. Yeah. Monetary unit is in normally in substantive procedures. Yeah. But again जिस तरह वो 60% वाली example थी कि उसमें हमने दोनों use किए, 60% में monetary obviously आ गया, और जो रिमेनिंग है उसमें हमने रैंडम भी यूज करते हैं, जजमेंटल कोई भी आप यूज कर सकते हैं उसके अंदर. ठीक है. प्रोजेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि सैम्पलिंग में कोई आया था, ऑब्वियसली यू हैव टू एक्सट्रापोलेट इट एंड सी के कहां तक आप एक्सेप्टेबल लेवल जाएगा आपका. राइट. Okay, that again is just a summary with just last point which has been added. Okay, evaluate and conclude the sample results में, या आप लोग वैसे जब मिले आप लोगों को तो पढ़ लीजिएगा. Obviously the font is very small, but it's just a summary of what we have gone through so far. Zoom पे देख लेना कोई question. Question. Yeah. Factors affecting sample size, we've discussed that. What are the Okay, what are the qualitative factors to be considered in sample selection? Qualitative, obviously इसमें risk factor आ जाएगा. Yeah. Internal audit की reports को आप देख सकते हैं. Fraud risk factor अगर कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे default rate अगर कहीं पे ज़्यादा है, इस तरह मैंने आपको बताया कि flood की situation में, although not necessary कि NPL आ गए हों, but risk factor को देखते हुए, तो that is also a qualitative factor. And factors affecting sample size. That I think we have. We discussed the materiality thing, yeah. Right. Any question on sampling before we move on? The other two are quite small topics. अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल. हाँ, अब मेरा सवाल ये था कि हम सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उस पर प्रोसीजर्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, और फिर अगर हमें मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होती है, अब हम उस एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे आइडेंटिफाई होने वाली मिस स्टेटमेंट को टॉलरेबल से कंपेयर करके निगलेक्ट करेंगे या उसको कंसीडर करेंगे, या उस एरिया के अंदर टोटल जो मिस स्टेटमेंट्स है उसको टॉलरेबल से कंपेयर करेंगे? टॉलरेबल जो मिस स्टेटमेंट्स होती हैं प्लान जो मटेरियलिटी का हिस्सा है, ये जरा थोड़ा सा मुझे इसमें कंफ्यूजन है. उसमें सबसे पहले तो ये है कि जब आपके सैंपल में कोई आ गया मिस स्टेटमेंट, तो आपने सैंपल को रिवाइज करना है और दोबारा से उसको रिप्लेस करना है. सॉरी, रिवाइज नहीं, रिप्लेस करना है. फिर आपने, अच्छा, रिप्लेसमेंट नॉट नेसेसरी वन हो, आप अपनी जजमेंटल पे कह सकते हैं कि मैं 2-3 और देखता हूँ, उसमें कोई एरर नहीं आया एंटायर पॉपुलेशन में. देन यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट एग्जैक्टली द रीजन फॉर दैट पर्टिकुलर वन. अगर ये रिपीटेटिव नेचर का है, एरर आए जा रहा है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू एक्सट्रापोलेट इट टू द एंटायर पॉपुलेशन. अच्छा, वो एक्सट्रापोलेट जब एंटायर पॉपुलेशन पे करते हैं तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक फाइट फ्रॉम क्लाइंट कि नहीं भाई आप कैसे कर सकते हैं, तो एक वन ऑफ द, देन फॉर दैट यू हैव टू परफॉर्म those number of procedures till you are satisfied कि नहीं यार ये इससे ज्यादा का एरर नहीं है. जजमेंटल चीज है,
मतलब ऑब्वियसली एक एरर को पूरे पे करना तो चाहिए, लेकिन आइडियली ये कि यू हैव टू फर्स्ट रिप्लेस दोस सैंपल्स एंड सी कि इज इट ऑफ रिपीटेटिव नेचर या वन ऑफ नेचर। सबसे पहले तो ये आपने ये देखना है। लेकिन अगर आप एंड अप होते हैं कि नहीं यार ये तो रिपीटेटिव हो रहा है, देन यू हैव नो चॉइस देन टू अप्लाई दैट ऑन द एंटायर पॉपुलेशन एंड सी कि उसका इफेक्ट कितना आ रहा है। तो टॉलरेबल को थोड़ा सा डिफाइन करें, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट का यूज होता क्या है? क्या एक Tolerable- ट्रांजैक्शन पे होगा या पूरे एरिया ऑफ ऑडिट पे होगा? नहीं, प्लानिंग मटेरियलिटी पूरे एरिया ऑफ ऑडिट पे होती है। आप ये देख लेते हैं कि भाई मटेरियलिटी क्या होती है, परवेसिव हो और आपकी एक ओवरऑल लेवल पे देख ली। फिर आप आ जाते हैं अकाउंट लेवल बेसिस पे। अकाउंट लेवल बेसिस पे टॉलरेबल एरर आता है, ठीक है। फिर आपने जब टॉलरेबल एरर करेक्ट कर लिया, फिर आप ये देखते हैं कि एनीथिंग अबव दिस टॉलरेबल एरर अमाउंट एज एन एडजस्टमेंट इज मटीरियल फॉर मी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अगर फर्ज करें वो पीएम और टीई के बीच में है, टी यानी कि वही मैं कह रहा हूं कि पीएम और टीई के बीच में है, तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट रिफ्लेक्टिंग, मतलब आर रिफ्लेक्टिंग ट्रू एंड फेयर व्यू, लेकिन आपने वो एडजस्टमेंट्स जो है वो करानी लाजिम है, ठीक है। जब आपने वो नहीं कराई तो फिर आपकी ऑडिट ओपिनियन वगैरह पे आपको देखना पड़ेगा। लेकिन टी आपका हमेशा क्लास ऑफ अकाउंट लेवल बेसिस के ऊपर आके असेस किया जाता है। थैंक यू। Thank you. ओके, सेकंड वी विल गो इन्वेंटरी कर लेते हैं। Third party inventory. इन्वेंटरी देख लेते हैं। स्क्रीन शेयर करनी नहीं। एक्चुअली सर मेरा क्वेश्चन जो है वो टीओसी से रिलेटेड है। जैसे सर आसिफ ने पहले बताया था कि हम टीओसी करते हैं और अगर हमें ये पता चलता है कि टीओसी इफेक्टिव नहीं है या कंट्रोल्स आर नॉट देयर, तो हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर पर 100% जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर टीओसी बहुत स्ट्रांग है तो हम 100% टीओसी पर रिलाय करें विदाउट डूइंग इवन अ सिंगल सब्सटेंटिव प्रोसीजर? नहीं देखें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपको डिजाइन और इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स बता रहे हैं, आपको सिग्निफिकेंट अकाउंट लेवल के ऊपर कंफर्ट नहीं दे रहे हैं। आपको ये बता रहे हैं कि आपके जो डिजाइन जो सिग्निफिकेंट अकाउंट में नंबर आ रहा है वो एक प्रोसेस के थ्रू आ रहा है, लेकिन वो आपको उस प्रोसेस से कंफर्मेशन दे रहा है। उसके आगे ईयर एंड बैलेंसेस आ गए, फॉर एग्जांपल कैश इन बैंक है, इन्वेंट्री है, आपने इन्वेंट्री के ऊपर टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लिया, ठीक है, थ्रू आउट आपने कहा कि हाँ बड़े अच्छे कंट्रोल है, सब कुछ है। ईयर एंड पे जब आप आए, अब आपने देखा कि क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, वो क्लोजिंग बैलेंस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग के जो पूरे साल कंट्रोल से वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपने उसका काउंट भी करना है, आपने उसकी ऑब्सोलेंस भी देखनी है, प्रोविजन भी देखना है, एनआरवी भी देखनी है। ये सब चीजें आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल से नहीं मिल रही हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल एक लिमिटेड प्रोसीजर्स होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल एक्सटेंडेड प्रोसीजर्स ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, उसमें आप कुछ चीजें ऐड करते हैं टू अराइव एट दी क्लोजिंग बैलेंसेस नंबर। ओके, थैंक यू सर। Right. Okay. See, in substantive, basically what we do, we check cutoffs. Let's say, for example, okay, we look into the, okay, it's analytical reviews, you do it month-on-month basis, department basis. Yeah, you do check invoices. Yeah, because the thing is that you have get comfort on the control environment. We check the invoices as well. लेकिन Yeah. टेस्ट ऑफ डिटेल में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल की इनवॉइसेस को आप दोबारा नहीं कह सकते कि वो Yes. मैंने उधर कर ली थी तो ये यहाँ पे है। दोनों का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। नहीं, No, no. प्रोसीजर हो सकता है एक हो, प्रोसीजर हो सकता है, ईयर एंड के प्रोसीजर कुछ ऐड भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके एडवांसेस है, एडवांसेस के अंदर ईसीएल नॉर्मली ईयर एंड के ऊपर कंपनीज कर रही होती हैं, ठीक है। अब आपका एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस इज वन एडिशनल प्रोसीजर्स इन द सब्सटेंटिव Yeah. टेस्टिंग व्हिच वाज नॉट देयर इन टेस्ट ऑफ कंट्रोल। आपकी ऑब्सोलेंस ऑफ इन्वेंट्री है या एनआरवी टेस्टिंग जी बिल्कुल, आप क्रेडिट टू ग्रेड पूरा A to Z देखते हैं आप उसमें। यस जी, यस नहीं, सेल्स इनवॉइस रिटर्न भी आप देख सकते हैं, Sales return भी सब्सिक्वेंट टू द देख ईयर सकते एंड सेल्स रिटर्न भी हाँ। देख। तो देखिए वही मैं कह रहा हूँ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल जो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल के थोड़े से एक्सटेंडेड प्रोसीजर्स हैं, यस बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बोथ इज डिफरेंट। एक आप नॉर्मली देख रहे हैं कि
कंट्रोल्स आर इफेक्टिव थ्रू आउट द ईयर। एक आप देख रहे हैं कि जो ईयर एंड के ऊपर ट्रांजेक्शंस में रिकॉर्ड हुई हुई है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गई हुई हैं, उनके ऊपर आपने, क्योंकि आपने रिलाय ऑन कंट्रोल कर लिया, तो आपने टेस्ट ऑफ डिटेल यू हैव टू परफॉर्म बिकॉज़ दीस आर प्राइमरी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। एक्सटेंड कम ज्यादा हो सकता है, बट ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस दोनों का है। कैश एंड बैंक है, बैंक रिकंसिलिएशन प्रोसेस है। बैंक रिकंसिलिएशन प्रोसेस आपने तो पूरा देख लिया, ईयर एंड पे आके आपने क्या किया, आपने कंफर्मेशन प्रोसेस किया। तो थोड़े एडिशनल प्रोसीजर्स आपको करने पड़ते हैं एंड में। ओके, वी हैव 2 मोर टॉपिक्स। क्वेश्चन जी जी सर, अगर हमने किसी एरिया पर जैसे रेवेन्यू पर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की है, रैंडम सैम्पलिंग में ऑडिट सॉफ्टवेयर के थ्रू है, जो भी हमने कहा एवरी 5th ट्रांजैक्शन हम लेंगे या एवरी 10th ट्रांजैक्शन हम लेंगे, और उसमें जो है ना मतलब वो हाई वैल्यू आइटम्स या उसकी जिन ट्रांजैक्शन की हाई वैल्यू थी वो कवर नहीं हो पाई, छोटी छोटी वैल्यू उसने निकाल के हमें दे दी, तो क्या हमें इसको कंसिडर करना पड़ेगा या ये ना फिर मतलब? देखिए, अगर आपने आपके बेसिस रैंडम सिलेक्शन है तो रैंडम सिलेक्शन बेसिस भी उसके पीछे एक थ्योरी होगी ना, आपने क्यों रैंडम सिलेक्शन किया है। वंस यू हैव डिसाइडेड कि रैंडम करना है, देन यू स्टिक टू इट एंड व्हाटएवर द नंबर इज यू हैव रीजनेबल बेसिस टू कंक्लूड के सब सही है। अदरवाइज तो आप मॉनिटरी उस पे जाएंगे। देखिए, रैंडम सिलेक्शन नॉर्मली कब होता है, इस तरह मैंने बताया टेस्ट ऑफ कंट्रोल में करते हैं। जब आप उस पे आ जाते हैं ना टेस्ट ऑफ डिटेल में, तो देयर आर लाइक वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि आप रैंडम सिलेक्शन कर रहे हो, बिकॉज ऑफ कि आपको वो कंफर्ट इन नंबर्स नहीं मिल रही होती जो आपको चाहिए होती है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल तक तो आप यूज कर रहे होते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट फिर आपके साथ थोड़े एक्सटेंडेड प्रोसीजर्स आपको अलग से करने पड़ेंगे, जिसमें आपके स्ट्रॉन्ग सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं। वो एक अलग ही थ्योरी है कि व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर, व्हाट इज सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, वो आपको एडिशनल करने पड़ेंगे। लेकिन जब आप मॉनिटरी वाली के ऊपर चले जाते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ एरर भी कम हो जाता है, और पॉसिबिलिटी और चांसेस ऑफ डूइंग एडिशनल प्रोसीजर्स भी कम हो जाते हैं। Okay, 2 more topics before we go to break. I think they're not very technical one, or very quickly we will cover inventory count. We are very close to year end, so obviously inventory count वगैरह के ऊपर quickly हम बातें कर लेते हैं. If inventory is material to the financial statement, then we have to sufficient appropriate audit evidence. Obviously the starting word is material. अगर material नहीं होती है तो we will not end up in even doing the inventory count. बहुत सारी बैंक्स होते हैं, उसमें एक छोटा सा इन्वेंट्री अदर एसेट्स में पड़ा होता है, वो क्या होते हैं, स्टैम्प्स इन हैंड या कोई होते हैं, यू डोंट नीड टू काउंट दोस। तो इस टाइप की चीजें भी होती हैं। अच्छा, इसमें हमने जो इंपॉर्टेंट चीज है, इवैल्यूएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग कंट्रोलिंग, ये आपने देखना है। ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस। नाउ दिस इज वेरी कॉमन थिंग कि भाई ऑडिटर जो है स्टॉक काउंट करने गया हुआ है, वो कभी भी नहीं जाता स्टॉक काउंट करने, उसका काम नहीं है, बट ही हैज टू बी देयर टू ऑब्जर्व व्हाट द मैनेजमेंट इज डूइंग। यस, आपने अपने आइटम सेलेक्ट करने हैं रैंडम बेसिस पे, सम बेसिस पे, और उसको रीपरफॉर्म करना है, बट यू आर नॉट सपोज टू डू दी 100% स्टॉक काउंट। तो एक चीज ये भी होती है कि अक्सर क्लाइंट जो है ना, वो आपसे एंटायर इन्वेंट्री लिस्ट के ऊपर भी साइन ले लेते हैं, यार ये हमने काउंट किया, आप भी करते हैं जरा। तो वो वी शुड ट्राई टू अवॉइड दैट। वी शुड ओनली बी साइनिंग जो हमने सेलेक्ट किए हैं, फ्लोर टू शीट और शीट टू फ्लोर, उसकी ओनरशिप हमें लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई कह रहा है कि हाँ यार ये मैंने 100 पेजेस मैंने काउंट कर लिए, आप भी हर पेज पे जरा इनिशियल कर दें, तो दिस इज नॉट आवर रिस्पांसिबिलिटी। जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दिस थिंग। ओके, इंस्पेक्ट द इन्वेंटरी एंड परफॉर्म टेस्ट काउंट्स। आ गया ठीक है। आई थिंक ये क्विकली वी ऑल नो कि एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज में एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, स्लो मूविंग, ऑब्सोलीट, डैमेज, एस्टिमेशन इन्वॉल्व। अच्छा, मूवमेंट ऑफ इन्वेंटरी, एस्टिमेशन इन्वॉल्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि बहुत सारे मैं नहीं कहूंगा, एक स्पेसिफिक कुछ इंडस्ट्रीज हैं वेयर एज एन ऑडिटर वी डू नॉट हैव एक्सपर्टीज ऑफ दोस काउंट। कौन सी है? ऑयल इंडस्ट्री है सबसे बड़ी, तो ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली जब ऑयल डिप्स होते हैं, मैंने खुद भी किया है, आई थिंक बैक इन 99 98 व्हेन आई जॉइंड द फर्म, वो सुबह 5 बजे जाना पड़ता है, क्योंकि वो जब सूरज ऊपर आ जाता है तो ऑयल का लेवल ऊपर आ जाता है, उससे पहले आपको वहां पहुंचना पड़ता है। अब वो चले तो जाते हैं, वो क्लाइंट कहता है देखो मैंने ये डिप किया है, वो डिप निकाल के देखा, इसके ये फॉर्मूला ही काउंट हो गया। हम बोलते हैं हाँ यार सही है, सब सही होगा। वी आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ दोस। तो उस केस के अंदर मैंने ये देखा है, जहां बड़े होते हैं, वी हैव टू इन्वॉल्व सम एक्सपर्ट्स। वो एक्सपर्ट्स का काम होता है टू गो विद यू, डू द परफॉर्मेंस एज योर रिप्रेजेंटेटिव, एज एन ऑडिटर रिप्रेजेंटेटिव, नॉट द क्लाइंट, एंड देन गिव यू कंफर्ट कि भाई ये काम है, मेरा काम नहीं है डिप करके वो जो भी बोलेगा मैं बोलता हूँ सही होगा। तो ये चीज एक है, और आई थिंक दिस इज वेरी कॉमन इन रिफाइनरीज एंड OMCs, क्योंकि इनके जो ऑयल डिपोज वगैरह पे इन्वेंट्री काउंट होता है, दैट शुड बी डन बाय एक्सपर्ट्स। और अगर आपके पास एक्सपर्टीज हैं
तो अच्छी बात है, नहीं है तो we always try to get the experts involved that. ये मैंने बताया कि observe the performance of management count procedures rather than doing it. Inspect the inventory, obsolescence, damage, age and expiry. This is very important. कि what are the procedures of client to identify the damage and age inventory, whether they are tagged separately, उनको किस तरह identify किया हुआ है, क्या कुछ किया हुआ है, because वही वो चीज होती है जो बाद में अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट हो रही होती है, उस वक्त हमारे पास उसकी कोई सपोर्ट नहीं होती, rather than कि हम कहते हैं उसने प्रोविजन कर दी है, लेकिन उसके बेसिस क्या है वो आपके पास इन्वेंट्री 31 दिसंबर या जून पे होने चाहिए. Age and expiry is important. Let's say, for example, of chemical industry, if you're planning for inventory observation count, you can say. So in that, you have to randomly pick and check the expiry date also. ये quite common, sheet to floor and floor to sheet. Yes. Basis again, that can be judgmental, that can be random, haphazard, कुछ भी हो सकते हैं, monetary value wise भी हो सकते हैं. Monetary value तो उस वक्त identify normally नहीं होती है because quantities होती है हमारे पास. Yeah. But obviously you can identify the values from your old records कि भाई कौन सा item कितना महंगा वाला है, उसको आप एक judgmentally भी देख सकते हैं. Yeah. लेकिन this is something which we should do. Now why sheet to floor and floor to sheet? Obviously it's very common known कि भाई आपने जो है टेस्ट बेसिस करना है और ये एक सरप्राइज काउंट जिसको कहते हैं कि भाई अचानक से आपने कोई चीज उठा के चेक कर ली है. ठीक है, सही है. Okay, unable to attend physical count. Obviously, there are two ways to deal with this. One is you have to work back. By, for example, आप अच्छा होता क्यों है? दो तरीके उस बातें हो सकती हैं. Either you are appointed as auditor subsequent to the year end, or either that location is somewhere where you cannot possibly go. मतलब rare circumstances में. Like we had a COVID situation where people Yeah. were not entertained. So some people they planned virtually also. Some people said that, oh, you can come over the weekend when there will be a less attendance of the employees, so at least you can attend. So these can be circumstances that's stopping you not to do the stock count at year end, basically. So इसके अंदर दोनों positions में क्या हो सकता है कि if you are appointed subsequent to the year end, then obviously you perform a test on that date and roll it back and see कि what were the ins and outs, which is very difficult at times. So obviously उस situation को case to case basis पे देखना पड़ेगा. Secondly, ये है कि आप कर ही नहीं सकते हैं, तो obviously it's a scope limitation, and then you have to see what your effects on the audit report. Impractical, जिसे मैंने बताया कि general safety threats और safety की वजह से हो सकता है. Obviously, then we have to perform additional procedures. General inconvenience to auditor is not sufficient. मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं नहीं गया था, तो वो acceptable नहीं है. So general inconvenience is not acceptable unless we have some basis. Perform alternative procedures, and as lastly I said, के effect on audit opinion, we have to see if we are unable to perform the count. Inventory at third party location, this is very important. Again, ये ज़्यादातर मैंने देखा है कि OMCs के अंदर होता है, because sharing basis के ऊपर OMCs are putting their oil reserves with, PSO is keeping with Shell, Shell is keeping with Hasco or whatever. So here, the third party confirmation is imperative, and that should be received if you are not able to go and perform the count over there, because you are not their auditors. So obviously it's very difficult to be entertained by them. They will let you in and do the count. In that case, the third party confirmation is very important. And if you are not able to get that third party confirmation, then again, you have to see the impacts on your audit report. That's it. Right. Any question on inventory count before we move to the last? Yeah. Sir, if we are observing a inventory count at any of the entity, and we got the information that there's some stock related to third party in the organization in which we are observing the stock count. So what is the related procedure to that? Again, वो third party is obviously you have to first inquire why third party stock is with you. वो दो तरीके से हो सकता है. एक जैसे मैंने oil की example दी. Secondly, even in the toll manufacturing, the third party stock is like with you because you are manufacturing not your stuff, but they are using your premises and machine to get their stock or things manufactured. तो एक वो भी तरीका हो सकता है. So first you need to identify why third party stock is lying with you. What are the process and procedures of management to bifurcate those third inventory stock from your inventory, and how the controls are effective कि वो use नहीं हो रहा हो आपके पास और आपकी books में ना आ रहा हो.
You are not supposed to count those, obviously, but you need to identify the controls and processes to bifurcation of those third party present. Thank you. Stop. Okay, last, I think, try to finish it as early as possible. The third party confirmation. Okay, external confirmation procedure effective. Obviously, we all know main जगहों पे कहाँ पे होते हैं? Bank, investments, inventory, payable, significant transactions outside the normal course, and related party. These are the main areas where we have to circulate confirmation, and lot of audit methodologies of firm sending confirmation is considered as a primary substantive procedures. You cannot avoid this. Yeah. I don't know for every firm or not, but I'm just talking about our firm. के you have to do. यानी आपको पता है कि जवाब नहीं आना, फिर भी this is a primary substantive procedure that you have to circulate a confirmation, and if we don't receive, then obviously we'll move forward. Okay, what are the factors considered when relying on confirmation? Obviously, it reduces the audit risk. Risk of material misstatement आपका कम हो जाता है. Objectivity of the confirmation of third party. Example, customer may not be objective in confirming their ability to pay outstanding invoices. Yeah. Obviously, this is very important. कि objectivity of the confirming party क्या है? आपका objective है, for example, existence check करना एक balance का. वो existence आप check कर लेंगे, लेकिन third party आपको ये लिख के कभी भी नहीं देगी कि यार ये आपने उसने confirm भी कर दिया, हाँ ठीक है ये payable है मुझे. But whether it is a ability to pay or not, it's not something which he will write. ठीक है? वो आपने अपना check करना है. तो just getting a confirmation reply from customer does not necessarily mean कि यार ये नंबर सही है, अब उसमें कुछ भी नहीं करना. वो कंफर्म कर दिया ना उसने कंफर्म एग्जिस्टेंस को किया है, अपनी एबिलिटी को नहीं किया कि मैं इसको पे भी करूंगा कि नहीं. So you have to understand the objectivity of the confirming party, the willingness of the confirmation party to respond. बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो रिप्लाई नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली वो भी आपने देखना है कि वो उसकी क्या रीजन है. नॉलेज ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हु इज रिप्लाइंग फ्रॉम द काउंटर पार्टी. अब ये होता है कि आपने बैलेंस कंफर्मेशन भेजी, बहुत ही बैंक बैलेंस है बहुत बड़ा है, आपने एक बैंक को भेजी और बैंक वाले में जो जवाब आया वो पता चला नीचे छोटा सा लिखा हुआ है कि जी रिलेशनशिप मैनेजर ने कंफर्म कर दिया, साइन में और स्टैम्प में. रिलेशनशिप मैनेजर मे बी इज नॉट द ऑथराइज्ड person to respond. It should be branch manager. Yeah. It should be whatever protocols होते हैं किसी के. तो you have to also see that जो reply कर रहा है वो कितना knowledgeable है, वो relevant है कि नहीं है. देखिए ना, relationship manager तो अपने customer का balance confirm करेगा ही करेगा. वो तो कभी भी उसको मना नहीं करेगा क्योंकि वो तो उसका पार्टी है. अगर वो फर्ज करें उसमें बैलेंस में डिफरेंस भी होगा तो वो ज्यादा दिखा रहा है तो वो कंफर्म कर देगा. लेकिन ब्रांच मैनेजर या अकाउंट्स मैनेजर या जो भी उस जगह का हेड है वो इंडिपेंडेंट पर्सन है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. सो ऑलवेज सी दैट हु इज रिप्लाइंग एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट नॉलेज ऑफ दैट पर्सन. ओके, आगे अच्छा पीछे आना. हाँ नहीं पीछे. हाँ, fraud risk factor may arise if the confirming party is related or economically dependent on the entity. Now this is very important कि आपका एक ही कस्टमर है जिसको आप एक ही सप्लायर है फॉर एग्जांपल जिससे आप चीजें खरीद रहे हैं, उस कंपनी का जो पूरा बिजनेस है वो आप पे डिपेंडेंट है. सही है ना. वो अगर आपके उसमें लड़ाई हो गई तो उस कंपनी का तो बंद हो जाना है, आप चलते रहेंगे. तो आपने ये भी देखना है कि भाई ये जो बंदा आगे से कर रहा है उसकी obviously it's not possible to get the 100% knowledge, but from different sources or something, if it is material, you can also identify कि यार how economically dependent that person is on me. अगर ऐसा कुछ है तो हो सकता है जो ये कंपनी बोलेगी वो बैलेंस वो कंफर्म कर देगा कि भाई मना तो नहीं कर सकता वो. Then you may end up doing some additional procedures and see कि भाई ये जो balances वगैरह हैं. This is when we are looking into the fraud risk perspective. Normal audit procedures में obviously you cannot go and see कि यार हर किसी का कितना ज्यादा बिजनेस है. जिस इस वजह से फ्रॉड रिस्क फैक्टर में आ रहा है, जहाँ फ्रॉड रिस्क हाई होगा, जहाँ मिस रिपोर्टिंग के चांसेस ज्यादा हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट वीक है, वहां ऐसी चीजें आइडेंटिफाई हो सकती हैं. नहीं 100% पार्टी को नहीं है. अगेन उसमें आपने पहले तो सिलेक्शन करना है ना, और सिलेक्शन हमने वो ऑडिट सैम्पलिंग जो की है उसमें से जो नंबर निकलेगा उनको आपने कंफर्मेशन भेजनी है.
और कुछ कंपनीज की फॉरेन सर्विसेज भी होती है, फॉरेन क्लाइंट्स भी होती है, तो फिर उनको तो हम वैसे भी नहीं। नहीं, उनको भी भेजते हैं, बिल्कुल भेजते Yes. हैं, फॉरेन को भी भेजते हैं। अगर इफ देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम क्लाइंट कि नहीं आप उसको नहीं भेज सकते, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हाई दैट रिस्ट्रिक्शन इज। बहुत सारी एक्सपोर्ट की कंपनीज हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं, उनसे रिसीवेबल होते हैं, वो बाहर भी भेजते हैं और जवाब भी आ जाते हैं। तो देयर शुडंट बी एनी रिस्ट्रिक्शन कि वो फॉरेन है तो आप नहीं भेज सकते। वो आउट ऑफ द कंट्री है, बट Okay. सपोज हम ईमेल करें तो वो ठीक, कैसे कंफर्म करें? बिल्कुल उस पे भी मैं आता हूँ। बिल्कुल देखें, भेजना तो जरूरी है, ये तो तय हो गया। और मोड ऑफ कम्युनिकेशन की बात हो रही है, Yes. ठीक है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक इज अलाउड, इट्स नॉट कि भाई यू हैव टू सेंड इट मैन्युअली। इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन आप भेजी जा सकती हैं। उसमें दो चीजें आपने ये जरूर देखनी है कि जिसको आप भेज रहे हैं दैट इज अ करेक्ट रिसीविंग पार्टी, ठीक है। मैं आपको चलें एक एग्जांपल बताता हूँ विदाउट नेमिंग अ क्लाइंट, ऑब्वियसली, जो मैंने प्रैक्टिकली खुद फेस किया है। देयर वाज अ क्लाइंट जिसके एक्सपोर्ट कस्टमर थे, ठीक है, और सारे एक्सपोर्ट थे उसके ज्यादातर। तो वी आस्क्ड देम टू कि भाई हमें कंफर्मेशन भेजनी है। उन्होंने कहा ये कंफर्मेशन तो देखें, वो तो छोटे छोटे वहाँ पे उनकी दुकानें हैं, ये है वो है, कंफर्म आप ईमेल ले लें। मैंने कहा ठीक है भाई ईमेल दे दें। ईमेल मिल गया हमें सबका। अच्छा, जब ईमेल मिले ना तो उसमें जिस तरह उसने कहा क्वेश्चनिंग माइंड वाली बात है, होता है ना, कुछ पढ़ के लगता है कुछ अनप्रोफेशनल से ईमेल है, मतलब वो नाम लिखा आगे 1 2 3 लिखा है इस तरह करके ना, और एट हॉटमेल है, जीमेल है, इस तरह के, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? अब हमने, हमारा एक बड़ा होशियार कोई ट्रेनिंग था, उसने बोला सर एक तरीका है, मैंने बताया, कहता सर मैं इसको ना गलत पासवर्ड डाल के एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। उससे क्या होगा? कहता सर रिकवरी एड्रेस मांगेगा मुझसे वो। तो पता नहीं, मुझे तो इतनी साइंस नहीं आती। उसने 3 4 जगहों पे जब डाला रिकवरी एड्रेस चाहिए, रिकवरी एड्रेस सबका एक ही था। तो वो रिकवरी एड्रेस से उसने आइडेंटिफाई ये किया, क्लाइंट के साथ बैठ के, ऑब्वियसली वो ऐसा तो नहीं कुछ कहते, उसने कहा भाई तुम ये अगर मैं इसको रॉन्गली एक्सेस करूंगा तो वो हमेशा कहता है ना कि अच्छा आपने गलत एक्सेस कर रहे हैं, तो Alternate email अब address. ऑल्टरनेट ये है कि या तो मैं आपको एसएमएस करके आपका कोड बताऊं या आपको रिकवरी। तो उसने जब रिकवरी देखे सबके सेम थे, जब क्लाइंट से पूछा उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ यार वो जवाब तो आना नहीं था, मैंने खुद ही बना के आपको दे दिया। एंड वी Yes. एक्चुअली रिजाइन फ्रॉम दैट क्लाइंट। Yeah. We actually resigned from that client because obviously when ethics comes in, so you cannot continue. तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि जिसको Yes. जा रही है Hmm. वो कौन है और जिससे आ रही है वो ऑथेंटिकेट। उसके लिए you have to perform certain additional procedures which we Procedures, call yes. callback procedures. Yes. Callback procedure क्या होते हैं कि भाई आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक ईमेल आई, तो you actually call back that person जिसकी ईमेल आई है to ensure कि ये पर्सन एग्जिस्ट करता है, ये इस Yes. कंपनी में करता है। You ask them different questions without, मतलब अगर बोले आप वही बात कर रहे हैं ना, बोले हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ, वो वाले नहीं, आप डिफरेंट डिजाइन करते हैं। तो रिस्क इज हाई व्हेन वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक, बट इट इज अलाउड। And you can access that information from, you can say, the company's letterhead, customer's letterhead, customers profiling. You can Google also. There are lots of resources now available. Okay. And when we are talking about the emailing confirmation to the customer, so COVID has, helped us a lot, and make us, used to of using electronic stuff and all. So अच्छा सर, ये बाजू का ये होता है कंफर्मेशन का रिस्पांस नहीं आता, उसका अल्टरनेट या कुछ? ऑल्टरनेट बिल्कुल है। कंफर्मेशन का ऑल्टरनेट डिपेंड करता है, अब अकाउंट रिसीवेबल है, पेबल है, बैंक है, yes. सब्सिक्वेंट रिसीट देख लेंगे आप, Elections, सब्सिक्वेंट रिसीट वो तो- देखेंगे, इनवॉइस टेस्टिंग करेंगे। Yeah. ये दो मेजर चीजें होंगी। अगर वो एविडेंस भी ना हो तो फिर आप ऑडिट क्वालिफाई कुछ नहीं करके करें, निकल qualify जाएं। करें। रिजाइन कर दिया जाए। फिर वेकेशन प्लान डिजाइन करेंगे। नहीं करें, क्वालिफाई कर दें पहले। फिर जिसको जो टास्क मिली है आ जाएगी ना फिर। वो वेकेशन प्लान करे बस, और क्या। थैंक यू सर। Then there is scope limitation. Okay, design जी जी। Yes sir. Yes sir. Yeah. You were saying that there may be something fishy that the person is replying is not actually exist or not. Yeah. So could it be acceptable, which I think should be acceptable, that as per IT verification, we can see the headers of the email where we can identify that the sending address is actually the sending address. Otherwise, sending address would be the different address and just mask, use the mask.
So could it be acceptable that you have to verify through IT protocols that the sender is the same? Though you cannot see the person who is sending, but the email is a legitimate one. जी जी, क्लाइंट के साथ बैठ के आप ये चीज देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। और द स्टार्टिंग पॉइंट इसमें सबसे जरूरी होती है कि डोमेन कौन सा है जिससे ईमेल, अब कोई कंपनी अगर एग्जिस्ट करती है बाहर, आइडियली दे शुडंट हैव जीमेल अकाउंट्स, दे शुड हैव द प्रॉपर xyz.com जो भी उसका होता है। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है। सेकेंडली सर आपने डोमेन की बात की, वो हो सकती है। थर्डली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो बंदा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वो आपने किस तरह चेक कर सकते हैं, वो एक I am प्रोसेस है। saying there is a Gmail and Hotmail free emails. And another thing is the domain, that the company owns the domain. Another thing in the Outlook, or if some IT person is there who knows that you can mask the email. For example, your email is abc@xyz.com. But when you create the email account on the Outlook, you can use that abc@xyz.com, but that is not your actual email address. अच्छा, Okay. So when you see the header of the email, it comes that where the actual email reflects on the header on the email, but not in the front side. okay, It's definitely on the back end जी side. जी जी, So the experts can see, or the IT people can see बिल्कुल, easily. बिल्कुल। So is it, my question is that, is it legitimate or is it acceptable to the audit practices or not? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक रिप्लाई इज एक्सेप्टेबल। अब जिस तरह आपने बात की कि टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन वेरीफाई कि द सेंडर इज जेन्युइन, आपने अपने प्रोसीजर्स पूरे करने हैं। Yeah. अब उसमें अगर प्रोसीजर्स पूरे करने के बाद भी कोई चीज आ जाती है, वो तो एक एक्सेप्शनल है, बट वी हैव टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ रिप्लाई, Okay. वो अलाउड है बिल्कुल। We have two more questions. We never put the amount in the bank information. How the relationship manager comes to know how much his client is showing in his book? देखिए, रिलेशनशिप मैनेजर की मैंने एक एग्जांपल सिर्फ दी थी, व्हिच इज नॉर्मली इन द केस ऑफ बैंक्स के जो लोन्स होते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में। बट यस, दिस इज करेक्ट। वी अभी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें भी हम यही बात करने वाले हैं कि वी नेवर पुट द अमाउंट्स इन द बैंक कंफर्मेशन बिकॉज वी नीड टू गेट इट फ्रॉम द क्लाइंट रादर देन कि वी लेट देम नो कि भाई कितना है। नॉट ओनली बैंक कंफर्मेशन, नॉर्मली इन एनी कंफर्मेशन इट इज एडवाइजेबल नॉट टू पुट द अमाउंट, क्योंकि वो जो आप लिखेंगे वो वही कंफर्म कर देंगे आगे से, विदाउट अक्सर चांसेस होते हैं कि वो देखे भी ना और रिप्लाई कर दें। Second question is what is positive confirmation? Right. What is negative जी, confirmation? अभी हम पॉजिटिव Will- नेगेटिव yeah. के ऊपर ही हैं। विदाउट गोइंग इनटू द स्लाइड, पॉजिटिव कंफर्मेशन एज द नेम सजेस्ट कि भाई जब तक आपका जी जी If a client is not willing to give you the address of a third party person, Yeah. and he do not want to disclose his, you know, the name, and we got the name from the search engine, from Google or any LinkedIn, is it ethically correct to approach that person? no, without client's authorization you cannot ask the client to give the confirmation। अगर वो आपको मना कर रहे हैं तो इससे scope limitation actually। It will impact your both Okay. time. Yeah. राइट, पॉजिटिव कंफर्मेशन में क्या है कि हम सिर्फ ये कहते हैं कि भाई जब तक आपका जवाब आएगा नहीं कंफर्मेशन के अंदर, वी विल नॉट कंसिडर्ड कि वो कहते हैं ना खामोशी को रजामंदी नहीं समझ सकते हम, तो जब तक आपका जवाब नहीं आएगा तो दैट कैन नॉट बी कंफर्म। सो इन सिंपल वर्ड दिस इज अ पॉजिटिव कंफर्मेशन। Negative confirmation is कि we send the confirmation, you never reply to us and we assume कि you don't have any disagreement. As an auditor, we assume that there is no disagreement. That's why you have not replied to us. It is considered as a confirmed balance. This is a negative, but नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि negative confirmation is not a very recommended way of sending confirmation. In fact, I have not seen for very long or never, in fact, in my career के we have sent a negative confirmation. जो जवाब नहीं आएगा उसका तो normally return of address पे भी envelopes वापस भी आ जाते हैं। तो लेकिन negative confirmation वो है कि if you never reply to us, we will assume that there is no disagreement. And for negative confirmation, you have to do certain procedures also. You have to ensure that it has been delivered. Let's say that via postal or courier you have sent it, so you should have a receipt with you that it has been delivered. So this is a procedure that helps you that okay, it was delivered and the person has received it. And that you have mentioned, let's say a week's time or 15 days, let's say that if you're not responded, we have presumed that, that the balance is correct.
or only legal confirmation also it can be. जिस तरह इसमें देखिए कि हम कब करते हैं, थर्ड पॉइंट आप पढ़ें, दैट्स वेरी जजमेंटल कि देयर इज नो रीजन टू बिलीव दैट द रिसिपिएंट विल नॉट रिस्पॉन्ड. आई कैन नॉट से दिस ऑब्वियसली, मतलब मेरे पास कोई बेसिस नहीं है कहने के लिए कि यार रिसिपिएंट जवाब नहीं दे रहा है वो, तो इसका मतलब वो सही है. तो अनलेस यू हैव दोस बेसिस टू कंक्लूड, तो फिर आप नेगेटिव के ऊपर रिलाई करें. Electronic we have already जी. discussed. Yes. चल रहा है? जी सही. ओके सर, अगर क्लाइंट बोले कि थर्ड पार्टी कंफर्मेशन पे मैं खुद डायरेक्टली उनसे करवा के देता हूँ आपको, जी. क्लियर करवा के, तो ये इज इट No, it's not not allowed. acceptable? No. You have to send the confirmation by yourself and you have to receive the confirmation directly. We have sent twice, thrice time, but there is no response. No, But then the client said, I will send. वो आपको जवाब नहीं दे रहा, क्लाइंट को दे रहा है. yes. तो ये तो फिर ज्यादा रिस्क है. देखिए कंट्रोल यही है. ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सेप्शन सिचुएशन हो गई, कुछ हो गई, तो आप पहले तो रीजन पता करेंगे, मुझे नहीं दे रहा, आपको क्यों दे रहा है. हाँ. ठीक है. और अगर दे रहे हैं तो फिर आप कुछ ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स कर लें उसके, और जस्ट टू इंश्योर कि जो वो कह रहे हैं वो सही है. सब्सिक्वेंट रिसीट देख ली, वॉइस टेस्टिंग देख लिया आपने, तो ये सब चीजें आप खुद परफॉर्म करें. लेकिन सोलली रिलाई ऑन व्हाट द क्लाइंट इज अरेंजिंग फॉर अस इज नॉट गुड. Okay, sir. Thank you. Okay, electronic we have already discussed. Discussed, yes, sir. Electronic We have done that. Yeah. ठीक है. Other important factors, reminders with sufficient interval. Obviously, एक दफा भेजना काफी नहीं होता है. We have to send reminders. Evaluate the responses. Just receiving a confirmation number not necessary means कि भाई वो जिस तरह मैंने बताया कि उसमें ability to pay को confirm नहीं कर रहा, existence को कर रहा है, तो you have to evaluate the response. Reliability of response. Restrictive language. Restrictive language जो है वो थोड़ा risk factor को high कर देती है, जहाँ वो normally कहता है कि okay fine, to the best of my knowledge and believe this number is fine, I am not taking any responsibility of this number, but from the books and records ये मिला है, it could have any other number. इस किस्म की अगर कोई language use हुई भी है from the respondent, तो वो should be avoided. Alternative procedures and documentation. ये procedures के भी हमने बात कर ली, and documentation obviously bank confirmation especially, because nowadays regulators are very strict in terms of the third party confirmation balances. And only getting a confirmation and filing is not enough unless we have proper evaluation and documentation and alternate procedure wherever necessary. So that's it. And any question on confirmations? जी हेलो सर, अक्सर ऐसा होता है जैसे हमने कंफर्मेशन भेजी, सामने जो थर्ड पार्टी है उससे अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो एज एट द डे जो है कंफर्म करके भेज देता है. वो 30 जून का बैलेंस उस पर नहीं लिखता. फर्ज करें कि उसे अगस्त में मिली है या जुलाई में मिली है और उसमें डिफरेंस आ जाता है. फर्ज करें हमने जो है वो 10,000 की भेजी कंफर्मेशन, उसने 8,000 की, उसने कहा भाई आज का बैलेंस ये है, उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. तो हम उसे 8,000 ही कंसीडर करके क्या करें आगे, कोई और नहीं ऐसा ना करते हैं. 8,000 कंसीडर करके, तो अगस्त का बैलेंस होगा, तो उससे पहला तो तरीका ये होगा, यू हैव टू गेट अ रिवाइज कंफर्मेशन. पहला पॉइंट तो ये है कि भाई रिवाइज करें. समझाए ना उनको वो. अच्छा नहीं समझते, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट. फिर हम क्या करें? सो आप उसको वर्क बैक करके देखें कि भाई 8 से 10 जो गया, 8,000 का बैलेंस है वो 10,000 पे चला गया. यही है ना कि अगस्त में उसका 10,000 बैलेंस है, उसने 10,000 कंफर्म कर दिया. 30 जून को 10,000 बैलेंस है. जब कंफर्मेशन गई वो कह रहा है कि 8,000 देना. 8,000 हो गया. चलें. लेकिन जब हमने सब्सिक्वेंट चेक किया तो बाकी उसने 10,000 की पेमेंट दे दी. जो 8,000 है ये 1 जुलाई के बाद. ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही है. ये ऑल्टरनेट प्रोसीजर से आप कर सकते हैं. इट्स नॉट एडवाइजेबल टू एक्सेप्ट एज इट इज, लेकिन आप अपना प्रोसीजर ये करें कि आप रिवाइज कंफर्मेशन भेजें. क्योंकि जो बिजनेस अच्छे शॉप्स वगैरह के साथ एंगेज होते हैं ना, उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. नहीं, मैं समझ गया. ऑडिटर या अकाउंटेंट, तो वो आप कर सकते हैं. देखिए, अगर आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई ये 10 से 8 या 8 से 10 जो भी मूवमेंट हुई है और वो मैंने वेरीफाई कर ली है, तो वो अब ये वही तरीका है कि आपने इन्वेंट्री काउंट बाद में किया और वर्क बैक कर लिया. तो ये भी वही तरीका है कि आपने अगस्त के बैलेंस का कंफर्मेशन लिया और आपको जवाब नहीं दे रहा है, वो आपने रिवाइज ही भेज दी, कुछ भी कर दिया, तो आपने ये देख लिया कि हाँ यार ये जो 2 रुपए का डिफरेंस, 2,000 का डिफरेंस आया है, वो एक्चुअल इनवॉइसेस और रिसीट ऑफ दीज 2 मंथ्स है, वो मैंने वेरीफाई कर लिया. तो वर्क बैक करके आपने कहा कि ठीक है यार, इट्स ओके, तो वो कर सकते हैं आप ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स पे. यस जी. हाँ. Is it necessary to send the confirmation on that date, or just हम उस पे
बैक प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं, ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स के थ्रू वेरीफाई कर लीजिए 30 जून का बैलेंस को। सर कंफर्मेशन तो सेंड करनी है, दिसंबर में अपॉइंटमेंट हो रही है कंफर्मेशन तो सेंड तो करनी होती है। कंफर्मेशन मुझे दिसंबर Yeah. में कंफर्म करना जरूरी है, पहले वो मैं दिसंबर की डेट क्या करूं? यस, इसमें एक चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, ये जो लीगल कंफर्मेशंस होती हैं उसमें होता ये है कि आप दिसंबर ईयर एंड काम कर रहे हैं, जनवरी में लॉयर ने 15 जनवरी को जवाब दे दिया, आप रिपोर्ट साइन कर रहे हैं 15 अप्रैल को, हो सकता है कि इस 2 महीने में कोई लीगल केस आ गया हो जिसको उसने नहीं कंफर्म किया उस डेट पे, तो मतलब हमारी मेथोडोलॉजी के हिसाब से ये है कि इफ द रिप्लाई ऑफ लॉयर एंड द ऑडिट रिपोर्ट डेट में 4 वीक से ज्यादा का डिफरेंस अगर है तो यू हैव टू गेट अ रिवाइज कंफर्मेशन, क्योंकि वो बहुत जरूरी हो जाता है कि सब्सिक्वेंटली कोई केस ना आ गया हो जो आपको उसने उस वक्त नहीं कंफर्म किया। तो ऑलवेज ट्राई टू गेट लीगल कंफर्मेशन एज क्लोज एज टू द ऑडिट रिपोर्ट डेट। ऑब्वियसली उस रिपोर्ट डेट पे तो नहीं आ सकता, लेकिन जितना करीब आप उसको ला सकते हैं, लीगल का स्पेशली ये, और टैक्स का, लीगल और टैक्स है क्योंकि उसमें कोई कंटीजेंसी आ सकती है, तो उस कंटीजेंसी के हिसाब के लिए ये थोड़ा सा उसको करीब से करीब लेके आना चाहिए। राइट, वी हैव वन स्मॉल सेशन कट ऑफ का। अच्छा, ऑलराइट, yes, we have to resend the confirmation. बिल्कुल Yes. करना चाहिए। Until we are satisfied with the evidence, we should not move on. If you're not satisfied, definitely you have to do it again. Yeah. Ji sir. Yes, you can do that, but if you have, let's say, if your firm has already decided that it's a policy, or you can say it's a methodology, that it's a primary substantive procedures, that we have to send the confirmation. Receiving is not the criteria, let's say. So sending the confirmation is your primary substantive procedure. Then you move on to the other substantive procedure, which is alternate आपको testing. भेजना अक्सर मेथोडोलॉजी में लाजिम होता है, नॉट दिस अजम्पशन कि वो रिप्लाई नहीं करेगा तो मैं भेजता ही नहीं, हो सकता है वो रिप्लाई कर दे, तो आप भेज दें, वो जवाब नहीं देता है तो आप ऑल्टरनेट अपने प्रोसीजर कर लें। ओके सर, जी जी, Yes, sir. सर एक क्वेश्चन है कि like it's an old amount, right? So we come to know about it and we want to send a third party confirmation from the client, from a supplier. Yeah. But when we send the confirmation, the reply was like a bit of different. Like he was telling me like he can't verify it because they doesn't know कि उन्होंने ये काम कब किया था, because it's an old amount now and they forget about it. So अब उस तरह की confirmation, like इस तरह की confirmation आ रही है कि उनको नहीं पता, वो बता नहीं सकते, like they are not sure about कि ये transaction हुई है या ये काम हुआ है, नहीं and that's a pending मतलब वो amount. बता नहीं सकते, ये उन्होंने लिख के दे दिया कि मैं बता नहीं सकता, या फिर जवाब नहीं दे रहा। नहीं, no, it's a verbal communication नहीं, वो मैं between कह रहा हूँ us. ना कि अगर आपको ये रिस्पॉन्स आ जाता है फ्रॉम कस्टमर कि दैट आई एम नॉट अनएबल टू कंफर्म दिस, तो ऑब्वियसली इट्स यू हैव टू परफॉर्म अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। अगर उसका जवाब आ ही नहीं रहा है तो भी ऑब्वियसली यू हैव टू डू अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। तो ये हो सकता है क्योंकि वो अक्सर लोगों के पास वो नहीं होता, फिर उसमें आप ये कर सकते हैं, यू कैन आस्क द क्लाइंट टू सेंड द इनवॉइस डिटेल्स टू देम, ठीक है ना, 10 इनवॉइस है, इसका बैलेंस आप बोले भाई इनवॉइस की आप कॉपीज लगा के भेजें उसको, या लिस्ट लगा के भेजें, उसको कंफर्म कर दे, वो फिर उसको रिकॉल हो जाएगा। देना किसी को याद नहीं होता, वो पेबल वाले को थोड़ी याद होगा उसको क्या देना है। I mean के इनके पास है, क्लाइंट के पास तो सारी चीजें, अदर पार्टी उनके पास नहीं, वो है कह ना, रहे हैं तो कि वही हम मैं कह रहा वेरीफाई हूँ। नहीं कर पा रहे कि ये जो आपने इनवॉइस भी भेजी ना, हम इसको भी वेरीफाई नहीं कर सकते। नहीं, फिर अगेन तो सीधा सीधा प्रोविजन या राइट ऑफ की बात हो रही है ना, वो तो फिर क्लाइंट ने गलत रिकॉर्ड किया हुआ है। लाइक मतलब थर्ड पार्टी कंफर्मेशन जो हमारी आ रही है, हम उसके थर्ड बेस पे पार्टी रखें। कंफर्मेशन इज द मोस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंस। Yeah. क्लाइंट अगर कह भी दे कि नहीं यार उसको नहीं पता, लेकिन देखिए मेरा रिकॉर्ड सही है, बट इफ दैट पर्सन इज नॉट एबल टू कंफर्म और इज यू नो दैट ही इज नॉट एबल टू कंफर्म बिकॉज इज नॉट श्योर कि सही है कि नहीं है, तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन क्लाइंट थिंग, और आपने उसके ऑल्टरनेट पे जाके कंफर्म करना है। बेस्ट इज कि उसका जवाब आए, अगर वो जवाब में फिर भी कहता है कि नहीं मैं तो कंफर्म नहीं कर रहा है, गलत है या मुझे नहीं पता क्या है, एग्जैक्टली लाइक वो खुद कंफ्यूज है, then लाइक it इज should इट be राइट और adjusted. नो। Then it should be adjusted because अगर आपको कोई थर्ड पार्टी आपकी फाइल देखेगी तो वो थर्ड पार्टी कंफर्मेशन को वो वेटेज देगी जो दूसरे किसी एविडेंस को नहीं देगी। Yeah. तो बेहतर है कि आप एविडेंस जो है थर्ड पार्टी को ही रिलाय करके कंक्लूड करें। चलो ठीक है, थैंक यू। राइट, आई थिंक आई एम डन विद फ्यू टॉपिक्स, आई थिंक जस्ट अ स्मॉल वन कट ऑफ के ऊपर है, और ये लंच से पहले का ही कट ऑफ है तो आखिरी होगा ये, तो इंशाल्लाह। थैंक यू। All right, thank you so much. Thank you, sir.
All right, so we move forward. So we'll be discussing cutoff. So I'll try to make it shorter because I'm sure that most of you people are well aware about the cutoffs. And so you can just raise your questions if you feel free. All right, moving forward. The definition, the purpose of cutoff testing is to determine whether the transaction and event are recorded in a proper period. That's what we all know. Okay, revenue, let's say stock has been recorded properly. Let's say the stock is in transit, it's already in shipped, but what the management is doing, the recording in their stock is a purchases. So all these kind of things, help us when we are doing cutoff testing. Importance of cutoff, the points in the accounting cycle where cutoffs is critical are as follows. The purchase and receipts of goods and services, as we discussed, requisitions of raw material for production, transfer of completed work in progress to finished good, and sales and dispatch of finished goods. So these are the normal examples which we face usually in our audits. So how many transactions to be tested? So frankly speaking, there is no sample size defined. Okay, it's totally based on your professional judgment and the risk of that head of accounts. All right, let's say you are doing cutoff testing of a cash receipt or disbursement, and the industry or the company which you're auditing is very sensitive with this head of account. So you have to take care of the situation, and based on the professional judgment, you have to select your sample size and you have to perform your cutoff testing. These are the factors to consider as we discussed that the shipping cutoff test, basically that if the goods are already shipped from, let's say we have imported from the company has imported from China, let's say, the goods have already been shipped, it's under sea, or let's say the goods have received at port side, but still the custom duty and all is not clear. So you cannot just include that in your inventory. You can just show it as a shipment stock in transit, basically, if the risk and rewards are already transferred to the company. Okay, let's say that the risk and reward will be transferred when the goods are received in the warehouse of the company. Then also you cannot book it as a stock in transit. Okay, you have to be very careful with that. And for example, that if the goods have been received at port side, or let's say it's under the sea, you can say, but the risk and reward has been transferred based on your, you can say, the shipment details or shipment deal or agreements or LCs or your insurance policy and all. So in that case, you can book that in your stock in transit. For receiving cutoff, it's really simple, for payable also, for receivable also, we need to ensure that when the transaction was booked. For best example, we have already discussed that my targets being in CFO, my targets are attached with revenue. If I show more sale, then I'll get more benefit of bonus and perks and all. So what I will do, I'll try to record the future sale in current period. Okay. And let's say if I want to do some kind of a tax saving or something like that, I have to understate the profit. What I will do, I will not record the sale which pertain to current period. I'll shift it to future period. The auditor should consider whether management has implemented adequate cutoff procedure. This is really important. This is not that the auditor has to do the cutoff procedure, but the management also had to ensure that they have certain protocols and procedures, and they do check how the cutoff has been performed. So these are the common example of cash in bank. Okay, in cash receipt and cash disbursement, we have discussed that also. Let's say that you have made any payment, but you are not showing in your, let's say, in a year-end side. The best example can be, as I said, the transfer of bank cash from one bank account to another bank account, or you have made some payment at the year-end, 31st of December, to show a good cash and bank balance in your books, and after that, what you did, you remove that balance from the bank account, you transfer to other bank account, which is not even pertaining to that entity. So this is also something very important to see. That's from that only you can analyze that cash was not belonging to that company, but to show a good, healthy balance sheet or cash balance, the amount was transferred to the bank account. That's it from my side. Thank you so much, guys. Thank you. Take care. So please stay. Oh, sorry. Yes, we do have one.
नहीं यार नहीं मेरी की थी एनी बेसिस में नहीं ये आ रहा है चला सकते हैं ये भी चला सकते हैं पूछ लें I don't mind I can speak whole day all right sir. That's it. We'll continue after the break. JE testing का थोड़ा सा it will take time, but I guess ma'am has to also come. Yeah. Huh? Right. So we can do JE testing after the break. Okay, we can do that, but yeah. Thank you so much, sir. I request Ms. Khurshid Kotwal to please come on stage and present the shield to our speakers. Sir Salman and Sir Abdul Aziz Saab, can you please come on stage, sir? I guess we should not miss this tempo because, mashallah, you all guys are participating. It's good. So we can continue. It would not take more than 15 minutes, I believe. Then we can go for lunch because I'm sure after lunch, everybody will be, sleepy and dizzy. So I don't want to miss the opportunity of such a lovely audience here. Can you share the screen? Okay. You have to pay for it. Okay, can I get the Okay, thank you. All right, guys. So let's begin with the journal entry testing. So how many of you guys are well aware about the JE testing? Can you please raise your hand? Journal entry testing. Nobody? Wow. Okay, what is journal entry? You don't know what is journal entry? No. Adjusting entries. What about the normal entries? Not journal entry? Sorry? Yes, the recording of transaction is a journal entry. Okay. I guess you guys are mixing up with JV, journal voucher, payment voucher, receipt voucher, right? I guess you're mixing up with that. But these all are journal entries basically. All right. It's not, there is no difference between, even if it's a payment voucher, even if it's a receipt voucher, or let's say it's a depreciation entry, which is JV entry basically. Even if it's a ECL entry, it's also a JV basically. So JV is basically, which is, you can say, which is not in a normal or routine. It can be routine like depreciation we said, but the categorization is that there is no receipt or payment involved in that. So it's basically a categorization. Okay, so journal voucher basically. And JE entry it includes all. Okay. So when we talk about JE entries, I'm not focusing on slides now because I prefer to be, have a discussion with you guys so you can have a
better understanding rather than you showing you and reading the content. Okay. So basically the concept is that when you have planned your audit, you have tested the controls, you have performed substantive audit procedures. In that also you have selected some samples. Okay. But still there is a certain, you can say, the population which remain untouched. Okay. And we have not done any audit on that. Can you think of any good example that is basically untouched, that we can say that this is not touched, we have not done it anything? What about accruals? What we have done on accruals? Did we identify accruals as in Scott? Did we perform any tests of control on that? No, we haven't done it because we did cash receipt, we did cash payment, okay, we did payroll, which also include salaries and cash disbursement. We did inventory, which also include goods purchases and payments. All right, we did revenue, receivable, ECL, everything is there. But what about the accruals? What about the depreciation? Depreciation, what we do? We just check the clerical accuracy, we just re-perform it, or let's say we are applying, you can say, IT application controls, we have tested that, then okay, we said the configuration is correct because we put the 20% rate and we said, okay, this much is alive, we said, okay, this is the number appearing at depreciation, all right? So basically the remaining population, which I have used the phrase of untouched, we need to audit that also, right? We have to make sure that we have covered the entire population. We have touched the entire population. The sample which has been selected have touched all the population basically. The best examples can be bonus amount. We see that there's accrual of bonus. Okay. Number one. Okay. What else can be? Director's remuneration. Okay. That can be board meeting. Let's say you have attended the board meeting and certain amount has been paid to you. All right. There can be an unusual transactions, or you can say which are not occasional transactions appear in the books of accounts. What it can be? Unusual transaction can be write-offs. Yes, very good. What else can be? Retirement benefits. Yes, but that's not unusual basically because you know that the company has a policy that you should have a PF or it's a gratuity or defined benefit plan. So you are well aware of that. What about exchange loss gain? Penalties? Yes, very good. Because you don't expect that there will be a penalties in the company because you believe the company is very good and the operating environment is good, but for somehow they missed it and they got the penalty. Okay, what else? What about the exchange gain and loss? That's not that usual because usually you don't see it, right? Let's say you are whole year was perfect. It's 30th of December. Unfortunately, what happened? The economic situation gets unstabilized. The dollar fluctuated. And within a 1 day, what happened? You have to book the exchange loss. So everything is messed up. The best example can be oil prices. If you remember, I guess 2 years back, when there was an announcement that on 30th June, you have to take the rate, and there was a big fluctuation in the rate. All the OMCs have to record NRV adjustment in their books. If you can pick up the listed clients, OMCs, you will find out that I guess the past 2 years, there was a big NRV adjustment in the inventory because of the oil prices. Okay, there was a reduction in the oil prices. And no subsidy was given by the government for that time. So these are the common examples which we can think of it that can happen. The purpose of JE testing is to highlight and to take care of a management override. Okay, management override of control. It can be related party balances also. It can be related party transaction as well. Okay, as I said earlier, also CFOs, bonus, perks have been attached to revenue. There can be a manipulation, so it can be done through JE testing. Okay, so this is a basic background. Basically, why we do JE testing. This is the reason that why we do it. It's basically you have to identify the fraud risk, and you have to make sure that you have done the JE testing, and you have gathered all the evidences to get the comfort that there is no fraud involved or there is no fraud risk, or you can eliminate that basically. Now, how to
what should be the sample size of JE testing basically? Because we always think that, okay, because when you take a JE dump from the client, or you can view it from the client system, you will see that around 1 million transactions posted by the company, let's say. Even for a small organization, you will find out 10,000 or a 1 million or 100,000 transaction has been posted, which you have not audited. 100% you have not audited. Okay, in that case, you have to determine a sample size. There is no fixed samples, which is the best practice. There is no fixed samples set for JE testing. It's purely based on professional judgment and risk-based approach. Okay, let's say you picked up the related party account and you said, okay, in that I have to assess these 3 accounts with these number of JEs and there is no fixed sample size, okay, for JEs. And now how you can set the different characteristic or parameter. Let's say sample size is done. We don't have to worry about sample size. Whatever we feel, we keep on testing until unless we get the comfort. But we have to document the rationale of our sample size, that why we have not done it, because based on professional judgment, we have done the JE testing. Now moving forward, what can be the best criteria? The transaction, let's say you have the data in your Excel sheet. What you will do, you filter the criteria with 0, 0, 0. The amount, let's say, whatever the amounts appearing in this JE dump with a value of saying 0, 0, 0, 999, 777, 888, these kind of a number that can give you comfort that. So you will find out, yes, sir. Well, sir, the thing is that when you, if you have the client is, let's say if the client ERP is good, when we are talking about Oracle and SAP, there is a query that you can run, you can get the JE dump from the client, whole dump. And literally we can get it very easily. Yes, for that you have, usually what happens that if in such environment, where the company are using SAP or Oracle, they involve the back office guys, I mean to say the service provider basically of the SAP or Oracle. They can easily run the query for you and they can extract the dump for you. Then you can, in QuickBook also there is an option, but let's say for Great Plains or some tailor-made, let's say software for ERPs, for that what you can do, you can review at screen basically. For that, then you have to do manual JE testing. Samples can be picked, then you go for the vouching and all, and you have to do it manually. That's a very painful process. But if you get the data, yes. 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 No, but you will get the control entry, you will receive it, right? But let's say if you have sub-ledger accounts, for example, you have posted 100 items, but for that 100 item, you're posting 1 entry in your ERP, let's say. So then you have to refilter it, you have to drill down and you have to verify what's happening inside, basically. So moving forward, if we have a data available in Excel, all right, we can use our professional judgment also. We can set our filtering criteria as well, but these are the filtering criteria which are normally used: 000, let's say 999, 777. Entry posted at year end, you filter the date filtering. Entry posted at weekend, because Excel can give you everything. Entry posted by CFO. Why CFO is posting the entry? Okay. Entry posted by general manager. Entry posted by procurement manager, entry posted by peon. Why? So these are the questions you need to understand. You have to ask them. Okay. Because when you get the data from the client, it has all the fields. It depends that how you have captured the data. Date, transaction, JV number, identify number, description, amount, posted by, user ID, how many times, how many logins, how many reversals, you can see everything in that. But definitely depends that how you plan your JE testing basically. So this is the basically reason that you have to perform JE testing, that you have to cover the entire journal entry dump to make sure that you have not left with that. But definitely you have to set up the objective first. You have to set up the sampling basis, sampling criteria. Then you have to set the filtering criteria. Then you perform all the vouchings and everything.
And then based on that, you conclude that there are no unusual transactions, there are no management override of control, there are no fraud risk that has been eliminated as well. So that's all from my side now. So if you have any questions, please feel free to ask. Yes. Sorry, come again. Same for you did it for test of details, right? Obviously, you have to understand, let's say if it's a JV, because now you are not just selecting the sample of JV or payment voucher or receipt voucher, because that's a categorization basically. So let's say if it was a depreciation, you have to check the authorization, the computation was right, it was for the correct period, so you have to take care of everything. That's what you have to design yourself, that what procedure you need to do. And that's the reason when you are doing different type of JE testing, you have to make sure that you maintain different Excel sheet tabs for each category. So at least you can have the same, you can say the substantive procedure, or you can say legends, what you have planned so far. Okay, we had some messages on. All right, so that's it. Thank you so much, guys. Thank you so much for your patience, and thanks a lot.